हाय एवरीवन, कैसे हो? क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। एक बार प्लीज़ प्रोब कर देना कि आपको आवाज़ वगैरह आ रही है कि नहीं आ रही है। लेट्स गो। वेलकम एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक टू इनक्रिप्टिकल। अभी 13 लोग टोटल हमें देख रहे हैं।
अभिजोत, हेलो हेलो अभिजोत, सत श्री अकाल। जिम गाइड जीनियस, हेलो हेलो। भाई वेलकम वेलकम टू इनक्रिप्टिकल। कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? आज लेट थोड़ा सा यार काम पड़ गया था सोच रहे से। मीटिंग, लेट्स गो, यस लेट्स गो, यस। हाय सर, हाय सर, हाय शिवम सर, क्या हाल है आपके? वेलकम एवरीवन, जो भी ज्वाइन किया है, जिसने ज्वाइन किया है, वेलकम एवरीवन, वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इनक्रिप्टिकल पे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अगर आप में से किसी ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक। सागर मिश्रा, हाय सागर, वेलकम वेलकम बैक टू इनक्रिप्टिकल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर प्लीज। जिसने नहीं किया है प्लीज कर लेना। Day 2 of joining you. Thank you so much AK. Thank you so much joining again and welcome to Encryptical. कैसे हैं आप सभी? बताइए क्या चल रहा है, क्या सीन है? सर मैं शादी में आया हूँ पर आपका लाइव ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच शिवम। आई होप आप शादी भी इंजॉय करेंगे। शादी का क्या है, शादी तो होती रहती है यार, आज इसकी कल उसकी, कभी ना कभी आपकी भी होगी अगर नहीं हुई है तो। थैंक यू बाय द वे फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ जिंदा ही, मतलब अच्छे ही होंगे। जिंदा तो नहीं है, काफी बिटी सा होता है ये। आने देते हैं एक बार और सभी को, फिर हम आगे कंटिन्यू वगैरह करें। जो शादी होती रहती है उसमें गड़बड़ हो जाती है सर जी। हाँ ये बात तो आपकी सही है। शादी तो एक ही बार होना चाहिए, कुछ लोग नहीं मानते ना। पर नेक्स्ट चैप्टर प्लीज ऐड ए चैप्टर इन। ओके, सो 13 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप में से किसी का मैसेज आया नहीं, मैंने पूछा है कैसे हैं आप सब। बाय द वे, जिस जिसने नया ज्वाइन किया है, जो जो पहले से नहीं जानता, सो मैंने जैसे पहले ही बताया था, हम
जल्दी ही एक बग बाउंटी से रिलेटेड एक प्रॉपर कोर्स वगैरह रिलीज करने वाले हैं, जहाँ पे हम सारी की सारी मतलब बेसिकली वो कोर्स होने वाला है हमारा प्रॉपर A to Z बग बाउंटी पे फोकस्ड रहेगा। उसमें सारी की सारी चीज़ें, केवल वही चीज़ें जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, केवल वही होंगी। इसके अलावा कोई भी ऐसी वनबुटी वगैरह नहीं होगी जो हमें केवल पढ़ने, मतलब केवल पढ़ने के लिए पढ़ना है। तो वो कोर्स भी हमारा ऑलरेडी डेवलपमेंट में है, एंड होपफुली सून वी आर गोना रिलीज दैट वन। तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड रहना आप लोग। एंड ऑल्सो जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ बग बाउंटी एजेंट वगैरह, उसका भी हम गिव अवे करने वाले हैं। तो आप लोगों को भी ज्वाइन करना है इस गिव अवे में और पार्टिसिपेट करना है, और उसके लिए आपको सब्सक्राइब वगैरह करना होगा। वंस वी रीच 1K सब्सक्राइबर्स वी आर गोना डू दैट। ठीक है। जो शादी होती रहती है इसमें अभिजोत सिंह की चाह, चाह पीने का चाह। मैं सोच रहा हूँ और थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लेते हैं, लेट्स मैक्सिमम 9:45 हो रहे, 9:50 तक वी विल वेट। और हम आज एक बार सब लोग ज्वाइन हो जाए ना, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू वगैरह करेंगे। बेसिकली सबसे पहले मैं जो काफ़ी लोगों का कहना था कि जो हमारा कोर्स वगैरह रहने वाला है उसमें क्या 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 रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उसके लिए मैं एक बार आउटलाइन आप सबके साथ शेयर कर सकता हूँ आज। तो लेट्स वेट फॉर अनदर नेक्स्ट 5 मिनट, और लोगों का वेट करते हैं, थोड़ा सा आ जाने देते हैं जल्दी। AK 2003 भाई का कहना कि भाई आज मैंने तुम्हारा डे 1 वाला वीडियो देखा, मैंने तुमसे रेस कंडीशन बग के बारे में सीखा। चलो अच्छी बात है यार, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आई एम रियली ग्लेड, थैंक यू सो मच, थैंक्स। और आज मैं रेस कंडीशन बग हंट करने की कोशिश की, लेकिन मुझे और कोई बग नहीं मिला। तो भाई ये बहुत नॉर्मल सी बात है, ये होता है क्योंकि ये तो होना ही था। कैसे हो सिफत? हाय सिफत, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड। कैसे हो आप, कैसे हो? थैंक यू सो मच बाय द वे ज्वाइनिंग करने के लिए। आ, तो ऐसा तो होता ही है भाई, ये रेस कंडीशन हर जगह नहीं होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि हर जगह हर एप्लीकेशन में जरूरी नहीं है ना रेस कंडीशन मिले, बट आपको सीखने को मिला। सो मे बी किसी आप ऐसी जगह यूज़ करो जहाँ पे रेस कंडीशन हो, तो आपको बग मिल भी जाएगा, एंड यू आर गोना रिपोर्ट दैट वन। स्कारमाइन भाई जी, बग बाउंटी किमें स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कि कुछ सीखना चाहिए या करने ਲਈ। सो थैंक यू पहली गल तो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने वास्ते। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਨਕਸ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਕਾਲੀ ਲਾਈਨਕਸ ਹੋ ਗਈ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਮੇ ਬੀ, ਐਂਡ you need to focus on how two applications connect with each other, how they transfer the data, etc etc। so once you have that knowledge, उसके बाद आप स्टार्ट, मतलब तो बच्चा तो ही स्टार्ट कर सकते हो। पर सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਨਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਲਾਈਨਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਸਿਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੇਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ हो। ऑल्सो इफ़ यू गो टू माई चैनल, चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है जो कि मैं कल भी शेयर किया था काफ़ी लोगों के साथ, बट नो वरीज, लेट्स मी डू इट अगेन। कहाँ है OBS? हाँ, जो कि ये वाला है। अगर आप ऐसे इनक्रिप्टिकल पे जाके यहाँ पे सर्च करते हो रोड में, ठीक है, तो आ वाली वीडियो देखियो जरूर सारी डिटेल में है। मैं ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡਾਊਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਸਕਸ ਇਟ। And thank you so much all the viewers who have joined us, thank you so much for joining. By the way, don't forget to like, share and subscribe if you haven't done yet, क्योंकि हमें ऑलरेडी 19 लोग देख रहे हैं और अभी तक लाइक केवल 14 ही है।
ऑल्सो आज का हमारा टारगेट है 850। कल का हमारा टारगेट 820 सब्सक्राइबर का था जो हम अचीव नहीं कर पाए। लेट्स सी अगर हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। बाद में काफ़ी सारे लोगों के काफ़ी दिनों से सवाल वगैरह आ रहे थे कि आर बी लाइक जो बग वगैरह जो हम हमारा कोर्स वगैरह रहने वाला है उसके टोटल क्या हमारे उसमें आउटलाइन वगैरह रखने वाले हैं, क्या क्या कंटेंट वगैरह रहेगा, क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो लेट मी शो यू एज वेल। अभी ये फाइनल नहीं है बट या मोस्ट रफली यही है। तो एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, बट अभी जो रफली आइडिया जो स्केच रेडी किया है वो है ये। ऑब्वियसली क्लाउड की मदद से किया है मैंने, बट ठीक है। आई होप नहीं, स्क्रीन विजिबल नहीं है ना। आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी मेरी। ठीक है। सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट वेरी बेसिक कि बग बाउंटी वगैरह क्या है, कैसे क्या है, क्यों है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो सबके क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उसमें बहुत सारे मुझे पर्सनल डीएम वगैरह आते हैं, मैसेज वगैरह आते हैं और कमेंट वगैरह आते हैं। सो वो रिलेटेड इसी से। सो आई एम गोना यूज ईच एंड एवरी क्यू एंड ए, और उन सबके मैं एक एक करके रिप्लाई वगैरह देने वाला हूँ कि क्या होता है बग बाउंटी की, रियल डेफिनेशन वगैरह क्या है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स वगैरह जैसे हैकरवन हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, ESP हैक हो गया, और जितने भी प्राइवेट इनवाइट ओनली होते हैं ये क्या होते हैं, कैसे, और रियलिस्टिक पैसे की बात की जाए वो क्या है। ठीक है। इसमें भी लीगल प्रोटेक्शन वगैरह होता है कैसे क्या, या इलीगल जो भी इशूज़ वगैरह होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम इस वाले सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा रहेगा सही प्रोग्राम वगैरह कैसे चूज़ करें। सो बेसिकली जैसे अगर हम बात करें एज एन एग्जाम्पल, हैकर वन की बात लेके चलें एज एन एग्जाम्पल, तो हैकर वन पे हज़ारों हज़ारों की संख्या में आपको प्रोग्राम मिलेंगे। तो कौन सा हमें प्रोग्राम हमारे लिए सही है, वो कैसे रहने वाला है, क्या सीन है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। डुप्लीकेशंस वगैरह से कैसे बचना है, मतलब बच तो नहीं सकते बट हमें ट्राई करना है कि डुप्लीकेशंस वगैरह हमें ना आए। तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट सेटअप, हमें जो भी जैसे काली लाइनक्स वगैरह का सेटअप करना, VM वगैरह इंस्टॉल करना। इसके अलावा हमारे जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कौन कौन से टूल्स वगैरह हैं जो मैंडेटरी वगैरह होते हैं, उन सबको टूल को एक एक करके यूज़ करना। प्रॉक्सी प्रॉक्सी का सेटअप करना ताकि जो भी हमारा डेटा वगैरह ट्रांसफ़र होता है वो सारा का सारा हमारा उसी के थ्रू ट्रांसफ़र हो। ये सब हम उस कोर्स के इस वाले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा हम साथ में और भी जो बेसिक्स वगैरह टूल वगैरह में जो इश्यूज वगैरह आते हैं वो सारे के सारे डिस्कस वगैरह करेंगे। उसके बाद हमारा आता है सबसे मेन पार्ट, यहाँ से हमारी जो बग बाउंटी की लर्निंग है चैप्टर 4 से स्टार्ट होती है। सबसे पहले आते हैं वेब फंडामेंटल्स। ठीक है। वेब फंडामेंटल में सारी की सारी जो भी, जैसे मैं लास्ट 3-4 दिन से बोलता आया हूँ आपको कि DNS क्या होता है, कैसे रिजोल्व वगैरह करें, IP एड्रेस वगैरह, एक जैसे हम टाइप करते हैं www.google.com, वो कैसे बैकएंड में जाके एक IP में ट्रांसफ़र होता है, और कैसे वो उसी नेम वगैरह के थ्रू या जो भी नेम सर्वर वगैरह होते हैं उसके थ्रू कैसे डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करता है। ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वाली चीज़ में। HTTP रिक्वेस्ट क्या होती हैं, उनको के कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से उनके स्टेटस कोड वगैरह होते हैं। जैसे बहुत से लोगों को ये नहीं पता 401 और 403 में क्या डिफरेंस है। ये सारी की सारी चीज़ें। उसके अलावा क्रिप्टोग्राफिक जो फेलियर्स वगैरह होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस वगैरह करेंगे। उसके बाद आता है हमारी रेकॉन की मास्टर क्लास, जिसे बोलेंगे कि स्कैनिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। या श्योर श्योर। हाई क्लैन, हाई टाची, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जस्ट गिव मी 5 to 7 minutes एंड आई एम गोना ड्रॉप अ मैसेज टू यू। थैंक यू सो मच बाय द वे फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है। ये सब डिस्कस करने वाले हैं। गूगल डॉकिंग हो गया, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स वगैरह एनालाइज करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें। एक्टिव रिकॉन और पैसिव रिकॉन क्या होता है, दोनों को कैसे हम कर सकते हैं नॉइस कम किए बिना, मतलब कम से कम नॉइस के साथ। उसके अलावा फिर एक एक इनके ओवास्प के जो भी टॉप 10 है वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे ब्रोकन एक्सेस हो गया, आईडोर हो गया, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन हो गया, एक्सेस हो गया, CSRF हो गया, SQLi हो गया। उसके अलावा इनके जो एडवांस टॉपिक्स वगैरह होते हैं जैसे रेस कंडीशन है, जो कि हमने Day 1 में देखा भी था। रेस कंडीशन वो केवल एक ही कंडीशन थी, रेस कंडीशन के भी बहुत ज़्यादा अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो सारे के सारे हम देखेंगे एक एक करके। सबसे हमारा मेन फोकस रहने वाला है बिजनेस लॉजिक फ्लो से, बिजनेस लॉजिक अटैक वगैरह, ये सारी करेंगे। उसके अलावा इसमें आई थिंक मेंशन नहीं है, नेटवर्किंग के बेसिक्स वगैरह पढ़ेंगे, लाइनक्स के बेसिक्स वगैरह हम पढ़ेंगे।
बेसिक्स, बट वही जो हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि हमने लाइनक्स का पूरा ही छाप दिया ना, बिल्कुल जो बेसिक्स कमांड जो हमारे डे टू डे लाइफ में या डे टू डे टास्क वगैरह में ज़रूरी है, वो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अदर देन दैट वी आर नॉट गोना फोकस एनीथिंग, जो ज़रूरी है केवल वही वही। नेक्स्ट हमारा सेक्शन रहेगा रिपोर्ट राइटिंग। सबसे ज़्यादा बाउंटी जो रिलाई करती है वो इसी पे करती है। क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो अटैकर्स वगैरह करते हैं, जिस वजह से उनकी एक वैलिड बग होने के बावजूद भी उनकी रिपोर्ट वगैरह एज यू नकार दी जाती है। वो सारी के सारे डूज एंड डोंट्स वगैरह डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है रोड मैप वगैरह की, कैसे आप स्टार्ट वगैरह कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें। एंड लास्ट में हमारा रहने वाला है एक बोनस चैप्टर, जहाँ पे हम एआई पावर्ड जितने भी टूल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज की डेट में एआई बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, सो वी कैन यूज दैट एज वेल। Demoted admin still has admin access after the press. Sure, 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 sure. Find it today. Sure, we are gonna work on that. Just give me a 5 minute maximum, Itachi, and we are gonna connect. उसके बाद ये जैसे मैं बता रहा था कि एआई पावर्ड जितने भी टूल्स होते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं एआई रिलेटेड जो हम रिकॉन में यूज़ कर सकते हैं, मे बी रिपोर्ट राइटिंग में ऐसे हम उनकी मदद कर सकें। जैसे क्लाउड कोड हो गया, उसका यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एमसीवी सर्वर्स वगैरह होते हैं, उनका सेटअप वगैरह करना, और जावास्क्रिप्ट की फाइल वगैरह एनालाइज करना, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं कि कैसे लैंडस्केप वगैरह चेंज हुआ। तो इस ये तो एक रफली आइडिया था, ठीक है। इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये बिल्कुल स्टार्ट है जहाँ से हम स्टार्टिंग पॉइंट वगैरह रहने वाला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे कंप्लीट वगैरह करेंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोना डू। इसके अलावा और भी कुछ इसमें चेंजेस वगैरह मैं करूँगा अभी, जैसे लाइनेक्स हो गया, नेटवर्किंग के टूल्स वगैरह ऐड करना, ये सारी की सारी चीज़ें करना, ठीक है। तो स्टे ट्यून रहिएगा, इसका हम जल्दी ही, अभी थोड़ा सा इशू वगैरह आ रहा है, ये सारी की चीज़ें करेंगे। ब्रो टूल्स कब फ्री गिव अवे करोगे ब्रो? ब्रो इट वाज फन, वी आर गोना डू दैट वंस वी रीच 1K, ठीक है। वंस वी रीच 1K सब्सक्राइबर आई एम गोना डू दैट। तो स्टे ट्यून और जल्दी से जल्दी लेट मी हेल्प इट आउट, मतलब प्लीज़ हेल्प अस, हेल्प बी जो भी है, सो दैट वी कैन रीच 1K सब्सक्राइबर्स। AK2003, मैंने फॉरगेट पासवर्ड लिंक के लिए रिक्वेस्ट किया था, फिर कुछ टाइम बाद दोबारा रिक्वेस्ट किया, अब मुझे 2 रीसेट लिंक मिले हैं, पहले वाला लिंक अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, क्या ये बग है? येस, दिस इज़ द बग। अगर पहले मेक श्योर करना दोनों लिंक का जो भी टोकन वगैरह है वो तुम वेरीफाई करो, और अगर दोनों से तुम यूज़ कर पा रहे हो तो वो पहले वाला एक्सपायर नहीं किया है, दूसरे वाला उन्होंने दिया, तो यस इट इज़ अ बग। सबमिट करो। अब कंपनी इसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है, आई डोंट नो, क्योंकि कई कई बार वो नकार भी सकती है, बट एज पर माई नॉलेज ये 101% ये बग है। और अगर पासवर्ड चेंज करने के बाद भी अगर वो टोकन स्टिल वैलिड है, फिर तो वो मना ही नहीं कर सकते ना, वो तो फिर बग है ही है। आई मीन आई फाइंड दैट बग एंड रिपोर्टेड वाज फन बग। यस 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 ब्रो, टूल्स का भी रिव्यू करोगे भाई भाई? ये इट इज़ अ बस बग बट मोस्टली इट विल बी डुप्लीकेट। हाँ वही मैंने बोला, आउट ऑफ स्कोप ही होगा, क्योंकि पॉलिसी वगैरह पे डिपेंड करता है, बट या मोस्टली इट विल बी। बाय द वे थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच। बस आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, जिन जिन ने प्लीज़ लाइक कर देना मत भूलें। 20 लोगों ने ज्वाइन किया है, अभी 20 की वॉचिंग है, बट सब लाइक पूरे नहीं है। एंड जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।
चाय ठंडी होगी गाइस मेरी आपसे बात करते करते। ਵੀਰੇ ਕੀ ਹਾਲ ਸਾਈਬਰ ਅਭੀ बढ़िया भाई बढ़िया मजे तू ही सुनाओ की हाल ने। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर joining and don't forget to like share and subscribe if you haven't। by the way thank you so much for joining। We have reached at 794। can we reach at 50 today? Let's see। अगर आप में से और किसी का कोई भी मैसेज या कुछ है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप, क्योंकि मैं भी नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर अंदर मैक्सिमम नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर अंदर विल स्टार्ट लाइव हंटिंग। एंड तब तक के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप एनी मैसेज इफ़ यू हैव कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड प्लीज़। अभी जो बुराया बड़े दाने निकलने तेरे। Start and start। By the way, today we are going to collaborate, so yeah, let's see how it goes and I'm very positive towards it, but let's see। आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी मेरी, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली गूगल मीट भी ज्वाइन की है, बट यार जोमेटो के प्रोग्राम में ब्लाइंड एक्सेस मिला था वरना वो डुप्लीकेट किया। यस हाँ ये होता है यार, डुप्लीकेशन क्या कुछ बोल नहीं सकते, बट एटलीस्ट हैकरवन वाले प्लेटफॉर्म में एटलीस्ट ऐसा है कि उन्होंने आप अगर वो ऐसा कुछ है तो एटलीस्ट यू कैन हैव द रिपोर्ट जहाँ पे आपको वो बताए कि भाई ये सीन है। तो मतलब थोड़ा ट्रांसपेरेंसी मुझे लगता है कि सही है काफ़ी कंपेरेटिवली, ऐसा मुझे फील होता है, बाकी डोंट। How many years of experience do you have? By total, I have been working for last 4 to 5 years in the industry. So yeah. क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना चाहिए ब्रो। हाँ हाँ क्यों नहीं सीखना चाहिए भाई, अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो 101%। भैया प्लीज़ रोड मैप दीजिए साइबर सिक्योरिटी का। मदारा गेमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग भाई। अभी मैंने रिसेंटली 1 मिनट पहले ही जस्ट मैंने शेयर किया था, नो वरीज आई विल बी शेयरिंग अगेन। अभी मैंने एक दोबारा से वीडियो का लिंक दे देता हूँ। ये वीडियो है, इस वीडियो को देखो, ये ऑलरेडी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी जिसका मैंने अभी लिंक शेयर किया है। इसमें आपके होपफुली सारे के सारे डाउट रिगार्डिंग द रोड मैप एंड एटसेक्ट्रा सारे क्लियर हो जाएंगे। एक बार इसको देखो, अगर इसके बाद भी कोई आपका डाउट वगैरह रहता है देन यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी एड द ईयरफोन एज वेल, क्योंकि हमें गूगल मीट करना है तो आई एम गोना यूज इट। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल बी बैक। मैं अपने ईयरबड्स वगैरह लेके आता हूँ। जाना मत कहीं पे, मैक्सिमम 1 मिनट।
Yeah, hello everyone. I hope I'm audible to you. Just drop me a message, please, so that I can start the screen sharing as well. Just check. Let me check on the mobile as well. The screen sharing as well. Yes. Yeah, but just 1 second. Just 1 second. Yeah, hi everyone. Today we are having Ahmed along with us. So that basically we are gonna collaborate on this part. We are gonna do live bug hunting, and I hope my and his voice is audible to you, all of you. Please, if it is, please don't forget to drop a message. I think we are audible to you guys. Yeah, Ahmed. I think we are audible. We can start. So first of all, thank you so much. Thank you so much for collaborating, and I would love to learn a lot from you guys. It's it's not about professional how professional you are, Ahmed, but it's about like that thing. Cybersecurity is cybersecurity is involving every day. Ahmed's voice is not coming. He's saying, just wait. So much. Thank you so much. I think no. Stream is not delayed. I think in the OBS I have. Just give me a second. Where it is? Yes. OBS में चेक करना आप इसमें कुछ होगा जरा स्ट्रीम देखता हूँ मैं Super Metinki. no worries okay so let's start okay okay first of all thank you a lot for collaborating with me and let's start okay so first of all a lot of viewers of you are beginners तो उन लोग को ये समझना चाहिए बेसिकली ये लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक चीज होती है जब भी ये लोग जो है ना बग बाउंटी में आते हैं they just jump into HackerOne and other other platforms Yes. which is which doesn't make any sense They just so try to like it's my first day today. I'll get $1,000 bug bounty, etc. etc. This is what yes they think. मोस्टली पीपल ये समझते हैं कि इफ इफ अगर ये लोग हैकाथन पे जाएं एंड कोई भी बग सबमिट कर दें तो इन लोग को पैसा मिलेगा लेकिन इन लोग को इन स्कोप और आउट ऑफ स्कोप के बारे में पता नहीं होता फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव माय वन ऑफ माय फ्रेंड हैव created understand the system deeply are you Ahmed, able to see my just screen Ahmed, just 1 minute, please, okay please. I don't know why am I audible to you guys? हेलो, अब आवाज आ रही है? Yes, सब ठीक है. Thank you guys. Yeah, Ahmed, I think we can continue. Sorry okay for the interruption. okay so वन ऑफ माय फ्रेंड उसने एक अपनी मेथडोलॉजी में रिसर्च शेयर की इट इज लाइक बेसिकली द ऑथर्स आर बग मिथ alchemist
Meow, I don't know what is his Meow name, meow. Username. superhuman. They Mm. are very skilled hackers, Mm-hmm. and they share their methodology. Mm. First of all, common thing, like Mm. you all have to understand the target deeply. First Yes. of all, choosing the platform like HackerOne, Mm. Bugcrowd, yes, we hack integrity. So my approach is that if you are a beginner, you can just start by yes, we hack or integrity because they have less competition than Yes, others. agree. 100%. That's what I've been seeing from the day one. Like, don't try to jump to the hacker one because there are a number of people already working over there, and the chances Yeah, of duplications will be very, very, very high. And the project you'll find there will is also a very mature. So, yeah, see, yeah. So first thing is that understand the target deeply. Like if you have any target in yes, we have integrity. By the way, you can just get less competition bug bounty program by mm-hmm. just Google docking. You can just dork Google in text bug bounty or Agree. vulnerability disclosure. Mm-hmm. You can get their own bug bounty pages that most people didn't hunt on there because it is hidden. And Yes. if you do that you will get a lot of less competition and you can get bounties as well. uh, First thing is that understand the target deeply. Mm-hmm. First of all, you have to read the security policy and their scope. That's the first thing you have to do because security policy is something like that. If they say like don't don't ever hunt on these areas because they are Out of scope sensitive. areas. If Mm. yes, and Mm. security policy like any activity that could lead to DDoS or DOS, that Hmm. is like that is not permitted. Like you don't have to do that. If you do Agree. that, that will be considered as illegal Yes, yes. because you There didn't will be follow the repercussion for security that as policy. well. Yeah. Then there is scope. You have to see the scope because mostly when I was beginner, I don't like मैं जो है ना स्कोप को देखता ही नहीं था एंड मैं जंप कर देता हंटिंग पे एंड व्हेन आई लाइक हंटिंग पे जंप करता तो मुझे बग मिल जाते थे लाइक Hmm. लीकिंग इंटरनल इंफॉर्मेशन Hmm. बट व्हेन मैंने मैं जब उसके आउट ऑफ स्कोप को देखता तो वो Hmm. आउट ऑफ स्कोप में वो जो है ना सारी वो चीज़ें आ जाती थी So, एंड so basically, you मुझे have been doing, you've been hunting for days, and once you find any bug, then you get to know that it's out of scope. So basically, you या are again back to G. yes, and my also I lost my reputation points, which is very like Critical. reputation point is something that you can get a lot of like you can show the companies how much reputation you have, Yes. The better and they the can reputation hire you you. have, so that It accordingly is they can. Like the private investigation, you also basis based on this one as well. yeah. So then we have privacy and policy. Like, what is their privacy? Let me open a HackerOne program Mm-hmm. that HackerOne. Mm-hmm. Let's say IBM. IBM. Let's say this is a VDP program, not a BBP, Yes, yes. but mostly people hunt on that because they need reputation points. Mm. And you can see here their overview and everything. First of all, you have to read all of this. Don't ignore anything here because Yes. sometimes you forget, like, they will say, like, I'll remember, always use this header in your request, or Mm. your chances of bounty will be like very Very, less. very less. So when you yeah, and when you didn't read that and you just found a bug, but you didn't follow their privacy and policy, everything, guidelines and everything. So you Mm. have to Go through each and read every it, section very careful. yeah, every section. Then there is terms of service that what does that mean? That Mm. there are like how their thumbs, like so basically you have to read everything here in Agree. the program when you open it, like out of scope and in scope. Also, Mm. most people, if they didn't see any out of scope in the program, don't
they will say like there is no out of scope, so I can hunt on any bug. But there is scope exclusions in HackerOne. If you go, there's a core ineligible findings are out of scope. If you Hmm. click on that, learn more, you will get the core eligible findings, and you can see theoretical vulnerabilities. Like mostly, if you found a quantity manipulation bug, that's a theoretical vulnerability. Like it is a bug, but it's theoretical. You can't So exploit it further. yeah, And without a impact, you cannot say this is a bug. yeah, you will just say like this can do that. You're just Hmm. making Hmm, hmm. theory of your own. Yeah, theory won't work. Yeah, agree. Yeah, that's out of scope. A lot of Hmm. things are here out of scope, like SSL configuration. So you have something like that have scope, Hmm. and what it can affect, like what is the impact on the But company yes, yes, or the how it's gonna impact or their the business. That's you need that, yeah, that you need to show them very in very detail. yeah. And next thing, after reading everything, you can go to their documentation, their Hmm. help center, like read everything there, so you can understand better what the program is made of, like what is the program purpose, Hmm. Hmm, hmm. the website purpose, the Android application, anything. If you're hunting, you will just have to see their documentation and help center to see what is the program about. Like, is it SaaS, SaaS, Yes, or it is e-commerce or anything else, you know. yes, yes, yes. Then we have public APIs or developer. That's very important. You know, like if you are hunting on a website, they mostly rely on APIs. Hmm. They rely on APIs. So, you know, like if you don't have knowledge about the API, how the API works of their own, you will not understand the API logic. So you have to first go through their public API or developer docs, where they have disclosed like their API bodies and everything, like how their API works. That's the good point. You can do you can gather a lot of information from there too. Okay, so that last point is very important. Yes. Mostly like to understand the API how it works. That's very important. Then, what is our goal? Like, when we start hunting, what is our goal here? The first goal you have in your mind is that identify what the company does. Hmm. You know what I'm saying? Yes, Like, business what looking, you need what to a, understand what the business looking, what they're trying to solve, we can say, and how the data is being transferred, etc., etc. So basically, you need to find the core of their business, what they are trying to, so that you'll have a like better understanding. identifying what the company does. Like, is there CRM type company, or is it like based on SEO? Like, you know, a Mm-hmm. lot of categories are there. Is it like educational type of company? Like, is it donating that donates? So basically, you have to identify it, because you will get an idea what type of Mm-hmm. bugs you can find here. Like if you like, let's say you have an e-commerce website, so you have an idea, you can find XSS, reflective XSS, Doom XSS, and also you can able to find it is very rare nowadays, the price manipulation. You can find that too, like that, and race condition also. So you have an idea that what the company does, then you are approaching what to do. Yes. Then second goal is that identify what data they handle. Like what they handle, like is it something like they are handling customers information or something like that, like credit cards PIA, or yeah. something. Mm-hmm. So you have an idea, like they are using, they are storing their customers' credit cards, their usernames, emails, and everything. So you have again another idea what to do. Then you have identify where that data might live. That's the third point and very important point. Let's say Yes. take an example of bucket. You know what is bucket? You know, Mm-hmm. like you have an let's say you target to find the data of this company, sensitive data that you have. Let's say it can be anything like uh,
directories or something important documents, you have to first see like where the data might live. If I were the developer, where should I have, like where it might the data live? So Agree. identifying that might give you another idea. uh, it may be like 403 if you go to the system, but mostly people like the developers forget to uh, they they just left the bucket open. Mm-hmm. I've seen a lot of things, and there's a high severity. Bucket AWS bucket is very Yes, sensitive yes. sometimes. Then what is your mindset? Like example mindset. Let's say, if I were building the system, where would I store Sense sensitive of stuff? agree. Just I told you, like the same thing. Mm-hmm. If I were the building, like let's say you are a developer and you build a system, and I'm now thinking behalf of you, like what if I was like Encrypticle and where did, like I'm just understanding you, like how you are able to, you know the data, like how you handle the data. So by your by having that mind, I can easily I can have a lot of more information. Agree. Mostly like when I was like in my starter days, when I know that you have to think like a developer, I just like let's say let's just hunt. And literally I was hunting on Grammarly, and what I found is that I like think like what the developer can miss, and I got an idea. The deep idea was that, like, whenever I was trying to share the Mm-hmm. DOC document, there was a share option with the you can edit edit the body, and I just paste an HTML stuff, you know, and I pass that when I click to invite, and when I go to my Gmail, Mm-hmm. I saw that the invitation contained the email, the HTML executed, like the HTML was executed in the email. So it can create a lot of impact for big companies because you can Yes. create You can add phishing. phishing, yeah, phishing that buttons वगैरह etc. Yes, yes. Then we have, where does the data come from? You know that. Mm-hmm. Where the data does the data come? Is it come from any database? Like let's say it is a SQL database. Like you can Hmm. say, where the data does the data come from? Yeah, Some sort of database or yeah. from So basically, they server are of some storing sort. in database or any Yeah. data is coming from a third party API, etc. Mm. And where is it processed? Like किधर processed हो रहा है? ये भी Mm-hmm. एक understanding है. Like किधर ये processed हो रहा है? Because let's say uh, take an example of SQL database. Mm. Now, if you have uh, that type of knowledge, we can just think about like how the SQL database is working, how we can where the data is processing by the SQL. Let's say a login form. The login form, like when you enter your details, let's say admin. Mm. Now the admin goes through database and search for admin credentials, and if the credential were matched, it will be like true, and it will just return you true, and you are authenticated. Mm. But if that same login form is vulnerable to SQL injection, you can just intercept the query. Like you can just remove the entire password query and just enter only the username. And Yes, when you enter the username, the query look like it have only only the username. requested the username, not the password. Agree. So he will just uh, search for the username. I mean, he searched for the username, he got a username, okay, admin. But here's the query is like intercepted, and it's break the password query, and it's no longer there. So
you got authentic like the login. You got authenticated to this admin system. That's SQL injection. Also, where is it stored? Like same thing. Okay. All right. Mhm. Now we have checklist. Like first of all, this is the second point. Exact extract high value targets what they care about most. Yeah, like mostly if you go to a program, they have like we are mainly interested in that type of vulnerabilities. Yes. So they care most about that vulnerabilities because it is Yes. sensitive for them and Hmm. it can affect their entire program. Entire So program. that's Yes. yeah. Yeah. So that is something you need to see. Then what you have to do, you don't have to think like normal hacker. You just Hmm. have to think like developer, not a hacker. There is from policies, build a target checklist like authentication systems, financial data, internal documents, user data, like that. You can create your own checklist, or you can with other checklists. Most of them like are outdated, but you can try. If you have your own methodology, you can just create your own checklist Agree. and then try to like Yeah, but these are the find most sensitive part where any application or any program care about, yeah. because Yes, this like is storage bucket. all come in the critical severity. Yeah, yes. And like financial data, invoices, billing, APIs, Stripe configs. That are a lot of sensitive. Yes. And okay. So you have to focus on high value bugs. Mhm. You know, like mostly people don't care about. You just say like they go to JGPT and tell him, I want to find that type of bugs on this website. Just list me some bugs so I can find it. The dumb GPT, I will say dumb GPT, just retrieve the old bugs and also the common bugs. Yes. that's that is not something you have to do. You have to first learn every bug. Not every bug, you have to master a field of bug. Like let's Mm-hmm. say you are mastering XSS, SSRF, SQL. If you have mastery on that bug, you can understand like the what the web application is Agree. about. Like let's say you have knowledge about XSS, you can easily find XSS because you can with the source code for XSS sinks, like Doom XSS and everything. Mm-hmm. Stored, So etc. yeah, store reflected Doom Reflected. XSS and Mm-hmm. other type of bugs. So these type of bugs, they are considered most critical and worth a lot of bounty. Worth a lot of bounty. Yeah. Mm. Okay, we have then using Google Docs. Yes. That is very underrated. Yes, 100%. This is where no one is focusing as of today that I have been seeing. But yeah, if you'll You use can the try Google Google to. Docs. It is very sensitive, outdated, but it still works. It Mhm. still works. It doesn't matter it is 2026 or something, but it works still. If you Yes. have like sent a website, you can just dork up PDF or docs. You can find these sensitive PDFs Data or stored docs. directly in the And documentation. yes, Yeah. also Google, you can use Google docking for internal systems. Like Hmm. you have to find this the website internal admin login form or something. You can Mm-hmm. just do some slash admin everything for docking. And then we have financial data, everything. Like Google docking is something that everybody should try at least one time. It has worth to try. Mm-hmm. It is outdated, I consider it outdated, but it still works But yeah, mostly. it's still relevant. Yeah. Then we have external discovery tools. That's So the the most important, like for wildcards. Like a lot of wildcards. yeah. There is showdown and senses. Yeah, I'm sorry to Not interrupt, but as per my knowledge, there are more than 80% bomb
I don't know why I'm hearing my voice twice. Just let me say it. As per my knowledge, there are more than 80% bug bounty hunters who even doesn't know what Shodan is. So this is the real. Yeah, Shodan is something like you have to understand the queries of Shodan and senses. Agree. Let me Otherwise, show you you will be something. just lost in over there. Yeah, this is my friend Bugmeta Aziraxon who Mm-hmm. brought this methodology. Mm-hmm. We were currently hunting on SSRF, and you can see we got an SSRF Mm. very Using the web. easily. Okay. Yeah, there is a wild card. We got a SSRF work on Mesmo. It's a private program. Mm-hmm. So we analyze everything. There is something this guy told me about. So let me show you about IBM that I am showing. Mm-hmm. Search for IBM. Uh, he got 100 plus bugs in IBM without doing anything. He just automated everything. So if you can And share these he's tablets, I would be love to uh, use it as well, if possible. uh, let me first find you, then I will send everything Sure, I sure, have. sure. Mm-hmm. So Bugmith told me that I found, you will not believe it, but like 100 bucks. 1,000 plus bugs. And when he just like uh, it's VDP, it doesn't Mm-hmm. matter. Like you need a reputation for your future upcoming. Mm-hmm. And this guy just pull a hack. What he did, he just take IBM, and I Mm-hmm. what IBM says. I told you to check the scope very carefully. I told you guys, like, if you go to the IBM website, you can see that they are just wanting you to get IBM websites, IBM tokens and secrets, and there is no out of scope here. Literally no out of scope here. You can Mm-hmm. just hunt. So if you go to Shodan, you just have to do something like, let me log in firstly. Okay, You can stop so if you screen do sharing like if you want to. uh give me more, not leave. uh if you do like organization Mm-hmm. IBM, Mm-hmm. okay, that will retrieve the entire IBM's websites and everything, so when it got like retrieved by there, you just also have to add a product. Let's say we are hunting on product Grafana. Mm-hmm. Let's search for product Grafana. You can see that we got a Mm-hmm. Grafana. Now just click on more, and if you have to download the API keys. I mean, no, Mm-hmm. sorry, API IPs. Like this. Okay, so we got that much ASN IPs. So there is a command, you can say, but I was testing for application level DDoS, so that was the command. Okay, this is the command Mm-hmm. So you basically, can you see stored there all this IP, into the yeah, TXT file. into the IPTXT file. Yeah, Mm-hmm. that's the thing. Let's see, open it. So basically, you automatically saved it to your local system, and you can use whatever you want. So Great. you can just let me open my Ali, by the way. It will be good from here to you. So let's see his methodology. What he did, he tried Shodan and Senses at the Mm-hmm. same time with that type of, and create his own Grafana Mm-hmm. template. And what he did, he just opened the Shodan and Senses and searched the query about both the IBM everything, and collected every API, IPs and Mm-hmm. there's and the IBM subdomains everything. Mm-hmm. Okay, then he got an idea. Now we have that much IPs and everything. We just can just open CMD command prompt, Mm-hmm. not command prompt, bash you can use for Windows nuclei too. He just open nuclei Mm-hmm. and take this template on, the Grafana template. And since he only choose the IPs of Grafana, since it's like product Grafana, that only retrieves the Grafana ones. When he did that, he just like
paste a command of nuclei using tag and everything. When he got literally a lot of bugs, literally a lot of it. He got like uh, thousand He five has hundred mentioned bugs, hundreds something with. 500 bugs, and Okay. after that, getting that much bugs, he told me to uh, should I split reports with you. I was going like, just report it, man. I think we can just make a automation. And he created his own automation. Now every time he got an bug, it Mm-hmm. goes automatically report to the To the program, hacker. HackerOne. He didn't have to do anything. The report Yeah. is made by the AI, just He like might be by using the using the, MCV server. yeah. So he reported the bugs, and let's open the IBM, Mm-hmm. or let's say I can just today I collab with him and find a bug. So let me open his profile. You can see he only hunted on IBM, literally Only only IBM. And you just see, he got a, he didn't do, he said like, takeover of उसने I. बताया उसने मेरे को बताया कि मैंने एक मंथ 2 मंथ से I don't even open burp suit, and he was working on IBM to become a number one hacker. Mm-hmm. पहले बार तो डुप्लीकेट हो गए मोस्टली Hmm. द रिपोर्ट को डिटेल लिखना, जो Hmm. आपने बताया अभी Impact. स्ट्रीम पे Hmm. कि रिपोर्ट कैसे लिखनी होती, दैट्स द मोस्ट Important. द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, Agree. बिकॉज रिपोर्ट लिखते वक्त यू हैव टू explain everything. So Triager will not make that mistake. Like Hmm. it got duplicate, then my friend just said like, this is not a duplicate. He forced that guy to reopen the report, and it got reopened and tried and resolved also. Hmm. It is high severity bug. It was 9.6 critical because critically. it was IBM subdomain. Literally, their subdomain was able to like you can take over the seven. It was subdomain takeover. Oh, Like that, showdown and senses are very useful. yes. You know, and we are trying to hunt on Destiny HackerOne using the same method. Mm-hmm. uh, it will be literally money farm, if you got the idea, because Destiny is something they have a lot of big. Let me show you the scope. You will be like, "Whoa, what is that?" This is tier 2. Let me first show the tier 1. This Okay. is all in scope. You can see these. All the It assets. is like 170. uh, works 167. These are Hmm. like in scope. Hmm. Then we have tier 2, like low bounty than tier Hmm. 1. You can see that how many assets are there. Oh God. If you automate all of 1000 these, plus. like the workplace, you can get a lot of bugs, man, like a lot of, and when you got that a lot of bugs, you can just report it easily and farm money. Approx 2000. Yeah, they don't pay well, but it's fine. It's, yeah. So we can just automate that, and we are So are trying you to using automate any, that. sorry to interrupt, but are you using any MCFs or how you are automating it? Can you say it again? I didn't Yeah. So hear are you. you using any MCV server, etc., or how you are No, like? no. My friend does, but I'm not. Like Okay. right now, I don't have MCP server, Mm-hmm. but I'm trying to get in that. I'm trying to make an automation, because mostly these days automation are something that like most. Here is an example from real Hmm. target, which is NASA. Let's say NASA. real world example. Okay. Hmm. So NASA in HackerOne, NASA have this so you have to read. I told you like uh, non-public NASA data is not authorized to reside on public third-party services. If you read that, you will understand. Mm-hmm. And as you can see, they care about ITAR.
slash EAR Mm-hmm. control docs. So you will try to focus more on those docs by Google Docking and other methods. As I told Yeah. you, how you if you have like top secret documents, and you can just try Google Docking using, like, you can mention PDFs and everything. You can find bugs in NASA, like into their internal document, not Yes. sensitive documents. Yeah. They left open, And but once you find the bug in NASA, you can even share with people that I have hacked NASA with the HTML only. only using docking. Yes, That will yes. be funny. And it might happen. Then we have, It might happen as well. yeah, yeah. Then we have focus discovery. This is most important part, like content discovery, Mm-hmm. fuzzing, uh, using fuzzing. Like a lot Yeah. of things are there, like subdomains, Subdomain. subdomain Yeah. enumeration, everything. Directly And fuzzing, etc. etc. uh, instead of trying random stuff, like most people just say like, I wanna found XSS, but what they did, they just open the program and see, oh, it's very complex, I can't do hunting on that, and just close that. uh, he just like hunted for a minute and Mm-hmm. just said, oh, this is hard, I can't do that, and just leave the program and move to Mm. switch to another one. That's the biggest mistake. You are changing the program, you just have to focus on one program at least for Yes. about 1 month. one Yeah, month agree. It sometimes might take a week or more than a week to just find a single entry point, and Yeah, sometimes you can find even in 20 minutes as well. So yeah. it happens as And you have to find rare bugs. well. Mm. This second rare bugs that most people miss, because rare bugs, like, that quantity, like, quality over quantity. Uh-huh. Yes, yes, So agree. that's the thing. If you get a single high rare bug, you can get a lot of bounty or reputation point from EDP. Mm. uh, you have to focus on big bugs, like, let's say, RCE. Most people like didn't try to get RC because there's like, it's hard, Yes. but you can give a try. You can just Mm. Who spend knows? a week for RC. Just focus on that particular bug. You will get that. Believe me or not, literally, I focused on XSS and I got that XSS. I just focus on accesses and I focused on their entry points and analyze everything, and Mm-hmm. I found an accesses. You can see I got an accesses there. Stored one accesses. It's still in, like, they will get Yeah, tries. Okay. see if it's duplicate or not, but I don't think it's duplicate because it's very I just found in very like deep areas. So you have to go in deep. If they store docs, maybe public storage exists. Yeah, Agree. like, you can you have to build them. Think like, uh, what if I do that? What will happen? If let's say example, there is an website I'm hunting on. I just got an idea, like, uh, let's say there is an board. Let me show a real example. I created a new board, and Mm-hmm. here I can put a lot of characters, like, uh, 900K characters, like Mm. a, There's no limitation. I was trying to get application level DOS, Mm-hmm. with no volume based. So what did I do? Like, I just paste everything here and add a graph, and I still like, what happened if I export the config, because there is a board that Mm-hmm. the name is very big, and I saw like, I got it, but nothing happens. Like, nothing happens, but I'm my mind giving me idea to do Mm-hmm. that, and I did Yeah. that. So you sometimes you will you'll you'll find sometimes, but mm. not every time. Yes, Literally, agree. I got an idea. What if I change IDs between portals in HubSpot and try to delete the data? And literally, the HubSpot data was being deleted. But when I report that, sadly, someone reported already, and So it it was was high duplicate. severity bug. Literally, is a high severity bug,
They just say like it's duplicate. We are trying to fix that, and it was like, you know, you got an idea, but still I got a bug, valid bug though. So it doesn't like, you don't have to chase bounty, but you have to chase the So basically, bugs, you know. yeah, you'll have to Yeah, move very logically. Each step should be very logical. Like, what will happen if I'll just try to add something like this type of character? How will application behave if I'll just yeah, add that's like etc.? that. How this is gonna be? Yeah. Yeah, yeah, that's. Then we have, if they use an API, maybe idle exists. Yes. API is something that mostly, literally, idle is one of the most occurring bug. Hmm. Of like IDOR, access Bola, is the most. BFLA, all three might Yeah, have. yeah, access is the most, but Mhm. idle is also considered one of the most occurring bug because Yes. uh, there are multiple endpoints that can be like vulnerable to idle. So idle is pretty good in secure direct object reference. Also try to break assumptions. Examples: this endpoint assumes user own this ID. Hmm. Let's say, let me show you something real quick. This guy, we are just hunting on that, and we found an endpoint there. Sure, real quick. Sorry for that. No, So, no worries. what was there? We were trying to get an IDO from X account context, Hmm. and we are trying to say to the server that we have access to the second account as well. But after reviewing everything, so what was happening here? You see that there is X account Hmm. context. So if we change the account context to someone else, it will give 401 Another. unauthorized. Okay. Okay, because it doesn't belong with the cookies Hmm. can't use. To, So you can think like, hmm. what if I believe, I make an assumption like adding another X account context with your own ID, so both will be there, and when the Hmm. servers see that it have the first account, so the second account will be accepted. Hmm. But after reviewing everything here, like, he just post both of Just them, he got a new error, hmm. 401, which For is like, you have to also see the errors. We hmm. got firstly the 403, I Hmm. mean 403, uh, this, no, sorry, 401 first Then time. for Then when we tried this type of thing, we got 403. So we got like new response and everything. unauthorized. So we tried a lot of things here, but we didn't succeed because they have a lot of security in authorization. Hmm. We got a code from as well here. We Hmm. tried to do everything as possible, but didn't succeed on that. It doesn't mean like, uh, wait, he just messaged me. Try to escalate SSRF to RCE. Seriously, this Yeah, guy is pretty definitely. If you funny. are having SSRF, you must try to escalate. He is trying to like escalate So, the SSRF to RC. so he has Great already man. find SSRF, na? Yeah, we found an SSRF. You can see that. Yes. Hmm. We can get. Let me send. So we have to hold also. Okay. So also try to break assumptions, like I told you, like believe the, like make believe the server that you are, owns this ID. Yes. You are the owner of this ID. Hmm. That can break the system. This file assumes it's private. This file assumes it's private, but you can make it just Public. open it, and yeah, the server can, you can just have to make a, Yeah. like, you have to make the server full that Agree. uh, So basically, yeah, you'll have to try n number of things and just try to yes. force him to do what you wanted him to be done. When you got a first like that type of patch modules and Hmm. like that type of, you have to test every bug here, like from access to blind XSS, SSRF, access, yeah, uh, or a course SQLI, C or IDO, course, yeah. cross But course, origin. mostly I have seen it's out of scope.
on most of the No, no, programs. because course without an impact. What that mean? Like Yes. most of, if you change the course, they will return course with that name. But there is something a header called course origin credentials true. If that Mm-hmm. appears true, like Mm-hmm. something like course origin, something like that. I really can't remember that. But Mm-hmm. if you go to the credential true and sensitive headers true, that Mm-hmm. means you can fetch any user's credentials and everything. So without that, you just got an origin reflected. That's not a bug. Agree. It is just like you can't do anything with that. But if you got a course origin credentials true, then Mm-hmm. it is a bug. It is very critical. You can make it very critical by chaining with another bug. Uh, there is something called attack chain. Like you Hmm. got an bug, you can attack Chain it like chain with with another another bug. bug. Yeah, that can make the severity much higher, High. and you can get a lot of bounty as well. This API assumes authentication is valid. Like I again say, like you are making the server full. that's Yes. that's that's very fun part. Like when hunting on that type of thing, it's very fun. Like you know. Agree. And we have validate and after you found something, like you know after found a bug, but mostly people said, oh, I found a bug, let's just report it. That's not the thing, man. You have to see, does this expose a sensitive data? Does it contain something sensitive? Hmm. Will that affect the company? If Yes. so, how? You need to Does it have match what the POC. policy? Yeah, does it match the what the policy says? Like earlier I said, like what the policy is, like they said, like third party testing on third party is not permitted. Mm-hmm. You can say, like if the policy says it's critical, then it is a critical bug. But if it says like this is third party, you will get just nothing. And is impact real? Mostly, like I told you, I got in my previous like hunting, I got a lot of bugs, but they have minimal impact. Like, you're having a lot of user interaction Mm-hmm. that break my report. So after, you have to validate and prioritize the findings. Okay, that's the real thing everyone should do. Agree. And then we have real world hunting on NASA. How to hack NASA hands on practical writer. That was they, I think, hacked the NASA. And before we start, we need to understand that NASA has a lot of documents and researchers. So we Yes. decided to focus on finding exposed documents as it will be our main attack surface. After spending time analyzing the system, it becomes clear that this program has been active since 2023 and has already surpassed A 10K plus. plus resolved bugs, like 10,000 plus resolved 10,000. bugs. At this stage, most of obvious vulnerabilities has been exhausted. Like I Yes. said earlier, most of them are exhausted. So randomly hunting for issues is no longer effective, as I told you. Instead, the focus should shift toward identifying Reappear. recurring pattern bugs that naturally reappear due to how the system operates. Hmm. You have to Which, make your own idea. What I can like think different, not like other hackers. Every program tends to have its own classification of common weaknesses. Yeah. yes. These documents, after careful review, we can say per 5,000 documents, around 10 to 100 confidential documents are disclosed, creating a very big attack surface, which opens the door for attacker to steal confidential documents. They literally Document. found 10 to 100 confidential documents. As we remember, if you go back here, it says like Mm-hmm. we need Top we secret. need this type of finding documents with sensitive makings, top secrets, ITAR, which makes the severity, like policy says that. So it is it is a valid 100,000%. Like Mm. there's no issue on that. Is a real sensitive data. So one notable weakness is how confident
indicated. Documents with markings such as top secret ITR and EAR are given in the policies and can be used for payout indirector. NASA hunting flow. Search control document markers. Identify exposed documents related if actually public. That's three things. Like they're hunting. They're just giving an example of NASA. Like told you, Google docking is still there. Yes. You can just say site Google and then any sensitive, In any title, in sensitive, URL, etc., etc. and also you can give an extension .pdf or something Hmm. else Okay. that can make more easier. NASA validation, check public release status, check outdated make confirm real sensitivity. This is all is NASA, like they are Mm-hmm. telling about NASA how we found anything. Uh, and we got like they have this submission. We check it out. On Bugcrowd We got like public access to air control. control. They got resolved. You can see background bug. This is called report and everything. They found a bug on 12th of March. A P4, but still a Hmm. valid bug because you have to see through like is it sensitive or not. All right, real world hunting on IBM, how to hack IBM Hinton. Like they are literally giving you whole how you can hack the IBM too. And I told you, you can see that the same thing I told uh, Mm-hmm. earlier, hostname secure transport, and they just use the uh, find the Villages. validity live ones using HTTPX Mm-hmm. tool, and Hmm. then use nuclei to see. You can see how much reports this guy have been like. You can see that resolved on 6, IBM, which is 10th, 11th. all of our criticals, literally criticals. He's farming criticals bugs. Mm-hmm. See, this is Daniel of service in test case yellow subgroup by just using automation. So you need a perfect. You just have to think like attacker, uh, and developer as well, and also you have to be unique. Like this, how we ever? I don't think so. Like some of the guys have known like if you do that, you will get that. Literally, he is getting a lot every single of critical. Like, critical on Critical, critical. Grafana, and it's like resolved and a triaged. Hmm. So you can see high severity bugs and everything, critical, and medium. You got a lot of bugs, and so on. It's all software based bugs, and IBM is all about softwares. Softwares. Agree. That's very like Tomcat full stack disclosure. Yeah, from input like that. So that's Best. something like the methodology. That We need more. methodology was very good. I read it whole, Mm-hmm. and it was very good. And I got some ideas with that. So Even yeah, I got to learn a that lot was of the from method. this as well. Yeah, that was a lot of like how much people are watching. Can you tell them if they have any questions or something? Yeah, so this was all methodology that Ahmed shared with us. So if you have any question, please drop in the comments so that we can ask him. Tell him. Okay, so one user is saying, bro, you are doing great. And can you explain how to find that bug? Which, yeah, he has already explained the methodology, how we can find the, yeah, he has already shown. So basically, someone is again asking the same how we can find the same bug. So basically, you have already shown all the methodology that you follow. So we need to follow it step by step, like step by step. Um, uh, they are saying like about the IBM and everything like bugs, Yes. but the thing is that you have to get an experience on tools and hand-to-hand practice. It's not about a joke. Like Hmm. you have this guy buyed Shodan Premium to get that a lot of bugs. Uh, so I shared with you guys, and you have to understand that first. You have to learn about bugs, how they like. Let's say you found a bug, you will Mm-hmm. just go to the AI and just say like, I found this bug. Can you just
You can just Validate it or make me a etc. report. He will create anything, man. Dumb GPT. I would say again, dumb GPT. Dumb ChatGPT is GPT. dumb. Just use instead cloud. Cloud is very good. Yeah, I'm using the I don't same. like So ChatGPT. basically, AI is there to help you out, but you cannot rely Yeah. 100% on any AI tool that I've been seeing from the very day one. Literally, I got my some reports being closed by just using ChatGPT. So don't rely on. You just have to create like you just have to write your own write up and report Yes, because it can make you more efficient. yes. And this is the industry where you cannot stop learning. So you'll have to improve Yeah, yourself every day. yeah. By the way, Ahmed, You have to. can you share this document so that there are a few people asking so that I can share the link with them if possible? Okay, I can. Uh, Let me ask permission from that. Okay, Yeah, can I share that? Let me do that. Back here. So, okay, let me wait for his reply. If he get reply and say like you can share it, I will yeah, share sure. it. Otherwise, it is like you know, personal thing. I can't do that. So yeah. By the way, that's fine. So I think we have to start that hunting Yeah, sir. probably. You can stop sharing. So first of all, let's say choosing a program. Mm. We will not hack on HackerOne because HackerOne is like it will take a lot of time. By the way, I have private programs that can less time, but we can't consider it. So we can just hunt on. Yes, we have got Intigriti. Both are very good platform. Uh, we have to find a program first. We don't have to like blindly trust on any program here. We have to find a program, then hunt on it. So program selection, I mostly rely on new programs because Mm-hmm. new program have a lot of vulnerabilities Yes, compared to the old ones. Old ones are have quite been mature. patched. Also, we have to see the attack surface. Is the attack Yes. surface big? If we have only one domain, then it is not good, my friend. You Mm-hmm. have to see like they are having wild cards, so you can hunt more. Okay, Yes. let me off my screen share just to log in on yes we Yeah, hacking. yeah, sure. I can't, I can't disclose my Yeah, here. uh, so Stop sharing. present something, present No, you something can stop else. sharing. Okay, there's something else here. Okay. Okay, So meanwhile, I can read the comment. Sifat. Yeah, Sifat, it happens. Duplicates is the बहुत होते हैं यार क्या करें 800 subscriber thank you yeah we have reached 810 so AK 2003 yes we are going to do it everything वन बाय वन एक एक करके धीरे धीरे करके हम करेंगे बट करंटली वी आर कनेक्टेड विद Ahmed. Basically, we are collaborating. He is just trying to expand his methodology so that we can go to learn. So basically, this is the मतलब साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री ऐसी है भाई कि जहाँ पे तुम्हें रोज कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना पड़ता है यार ये चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ यू कैन नॉट से कि आई एम हंड्रेड uh, परसेंट डन आई नो हंड्रेड by परसेंट the way by the way क्या आप चेट से बात कर सकते हैं क्या उन लोग को हिंदी में लाइक हिंदी में
समझना अच्छा लगता है because a lot of them I don't think so they can understand No, I English. think they can learn basic English. We can continue, which in Okay, whichever okay. language you are more comfortable. No, I can use both. If If you like. they'll have any doubt, I can explain them in Hindi as well. Okay. No worries. So program के लिए Mm-hmm. we can just first of all let's say you can just go to first activity. Mm-hmm. Is the most important area. In Now have let's a say decent this is understanding. insecure. There is insecure direct object reference. Now if you go to back, I have a trick. If you click on not add filter activity area, click on sorry. Let me see. It was something filter sort. Okay. There was program activity. If you click on new to old, you can see in which program this guy in the activity found an idol. That's the thing I use a lot and hunt on that one. But you have to see the bounty tone if you Yes. have the program has reading everything. So we have to test. I don't have any professional experience in what I get. Or, uh, okay, Sir. we have to find a great program here. Mostly, I found those like SaaS, something Software. like Mm-hmm. that. Mm-hmm. Yeah, because they are they are very they are having a lot of big surface Mm-hmm. such as inviting members and privilege escalation and everything. So we can try that. Mm-hmm. Uh, I have one program there that we can try. So you have to just focus on the scope Mm-hmm. and the attack surface. That's just the final thing I would ask, because I mostly focus on scope and attack surface. If the attack surface is big, you can have high chances for bugs. Uh, there was Space Light, if you know Space something. I can't remember that program. I think uh, I can just try to find it. Um, can't show to cover. It's still under dev. Okay. Uh, he's saying like it is still under dev. You can't share it to public. When it's go completed, you can share it. Yeah, sure, sure. We can discuss on that. It is still on like under development. Currently, There he's are working on it. more. It is right up basically. So he will just then publish it. Okay. Um, basically the e-commerce websites, I have tried a lot on e-commerce, but I didn't get till now any bug in e-commerce, because e-commerce, I don't know why, for me it's hard, very hard, because they are having very less uh, attack surface Mm-hmm. mostly. So uh, don't focus on e-commerce though. So also one another tip, if you are beginner, you have in bug bounty, you can just go to Hacktivity and see Mm-hmm. what people are reporting. You can Yes. get an idea from them, like what they are doing. You can get a lot of help. Like if you are not able So to basically, understand you will the, get to learn a lot. What are the steps yeah, any attacker has done, how he approached at that particular point. yeah, you can learn their methodology. Yes. uh, let me show you something. In bug bounty field, Shopify, I was shocked, like what the hell is this So guy. View is one of the most active uh, program, let me and show they you pay a something. lot. You can see that this Yes, guy just pulled out that much money. 120K, I was shocked. somewhere around And 1 CR this guy, in Indian this rupees. it, it is a lot. 1 It is CR like, in INR in a single bug. It might have taken yeah, him maybe 15 days or maybe a month, but
the end result is that he reached at 1 CR. Damn. Great, bro. Yo, hello. I'm audible. Yes, you are. Oh, okay. My Wi-Fi problem, sometimes happen. Okay, so you have to go too deep. Okay, let's focus on bug live Mhm. live hunting. Basically, one of the biggest problem in USB hack is that they have very less programs, like Hmm. about 70. Most of them are just closed. It was 93 back then, but I don't know Okay. why it is like now uh, very less than in like 90, 70. Uh, we can hunt on which book. Let me just focus on what you can find. You have any program on mind that have I think we can start with the accepted? Harmon as well. With the That one, like the latest one, the yeah, first one. Yeah. Harmon. Let me see the scope and everything. Yeah, I told you. it's a Hermes wild design card. energy. Okay. Hermes designs ingenious production solution. Automatic solution. Okay. Keeping users benefits very security. Testing policy. You can see this is the most important thing Hmm. here. Please adhere to the following rules while performing research on this program. You don't have permission to test Daniel of service DOS Yes. attack. Avoid tests that could cause degradation or interruption of our services. Yes. Don't use automated scanners. Mostly people use automated scanners. Hmm. They said like don't use automated or tools that generate large amount of network traffic. Like this is very if you are using automation, you just Hmm. have to rate limit the automation like for that Yes. like uh every request per 5 seconds like that. Do not leak, copy, manipulate, or destroy any user data or anything. That's illegal. Obviously. Hmm. No vulnerability disclosure, full, partial, or otherwise is allowed. Like, uh, if you got a vulnerability, you don't have to share it Hmm. to anyone because it is very sensitive. If you got an RC, let's say you got an RC, you have just share it with your friend. Who knows? Who knows? Let me show you everything. There was a hacker one here they are having their own chat group here one of the guy if I show you, sorry for that, but let me show you something. Let me just hit here. uh, that user. You can see that just a reminder to all to not trust people online. Hmm. He shared his own bug, and this guy stole his bug. Oh my. Improper verification of cryptographic Cryptographic signature signature. allows unauthorized PIA. access I to think it's user just PIA. critical or at least high severity. Yeah, and he just stole it. That's why you don't have to share it. Also, in some scenarios, attackers can exploit Mm, these type of vulnerabilities for their own purposes to sell. Like they can do bad things. Make sure to apply hunting requirements policy, user agent, and VPN if they have any policy. Reward mm. eligibility. We are happy to thank everyone who submits valid reports for example.
You have to read. You must be the first reporter of vulnerability, as I Yeah, said. yeah. The vulnerability must be qualifying vulnerability. The report must contain the following. This is the critical part. You have to give everything here they ask, otherwise it can make a problem. You must not break any of testing policy rules. It's about you must not be a former or current employee of Harman International or one of its contractors. Great report. CV scoring and everything. Okay. The final print, you are responsible for paying any taxes associated with rewards. That's not. So we are having this. Firstly, let's analyze GBL. Mm-hmm. We have a lot of things. Mostly, I prefer to hunt on critical areas and Yes. wildcards Wildcard. because they are they are having a lot of things. First of all, let me see what is GBL about. Jebel is So while okay, it's the is it like e-commerce? yes. Okay, we can hunt on. There's a geo IP. What is that? I don't know. What find a device? Find a device. I don't know what was that, but let's say India and everything. I don't know. Let's select India because okay, we are having that. First of all, most importantly, I search for like their inspect section and then sources because here's the part where mostly what's not working. Let's see here. Something not check. Um, Uh, I also found. Oh, wait. What's that? What is that? What's that? Internal JS script? What is internal? PWS. It's internal. Oh, no way. Zoom. Internal JS script. Oh, sorry. No. Like there is internal JS script. What is that about? Visitor ID, customer ID. So far, we don't have anything here. Sensitive. Maybe Also, you you can can open try it this. in new You tab. can, yeah, we can open it in browser. Mm-hmm. But also, you can try API key like searching, like right clicking on that and search in Mm. all files by trying to find some hard coded credentials such as API key. Because I found, I think, an API key back then in Wave.js Mm-hmm. and it was critical. They left the API key and I was able to access that thing. We can try everything here. Let me first open that in the tab. So it is bug function. Okay, just use JS beautifier. JS beautifier, as I said earlier. Because we can't understand Hmm. We that. can't read it. Beautify. Okay, okay. Notepad. I don't know about JS that much, but I can understand what is when expires to June. So basically, they're trying to try the expiry date. Version return anonymous. There's something like that. Whenever let this return visitor ID anonymous. That can contain your own IDs. But so far, I don't think so. It is. It must be internal, but I don't know. It can't be like that. We don't have any POC. It is not Mm. a thing. Oh, wait. Oh, I thought we can we got something here, but it's the PK test cookie. Uh, I don't think so. There can be something here. Okay, web analytics. Oh, it's web analytics. You can search for something, but mostly web analytics tracking are just useless. This is my experience. Let's just sign up. Action register.
I think I hunt on that website Hmm. previously. I don't know. Yeah, I think I hunt on that. So check order stuff. We can find something here, to be honest, in order number and email address. Check an order. So view your order even if you're not registered user. Okay, we can try that. Let's say we can put an comma here or something. An email address to order. We can just spell any. Uh, must, must. I don't know what should I enter here. I don't know seriously. Let's Open the. just enter stuff. Okay. I just want to analyze the request. How we Yes. can get not at all. I prefer mostly manual hunting because Same you here. can get. Um, oh, I think. Wait. It can cause trouble. Let me You add need in to add target. scope. Sorry. Let me add this in target. JBL.com. Yo, hell no, my IP. Why I'm restricted? What the hell? It's because of Bug. proxy or something? No. I don't know. We detect unusual activity from maybe region based or something. Maybe. Uh, no, we got temporarily restricted because of, I think, it is something bad. Oh, wait. It was not that. You remember I put something crazy here, there, quart and is equal to and quart, Yes. which Yes. Yes. resemble Yes. Yes. SQL, Yes. which Yes. resemble SQL, Yeah. and that their WAF detected that it is a SQL breaking query. Breaking the query. This Yeah, so they have no. blocked me. They are having CD okay. So their type of payloads also do that, and I'm temporarily restricted. Okay, let's focus Even we can on try in this this. condition VPN as well, or maybe IP spoofing. We can try as well. Yeah, we can try that. But firstly, I want to find a their target that have something like surface or find a retail. Um, what's that? It's not loading. Programs are so weird. Okay, we got this. Hmm. Oh, I can't show my location to be honest. uh, I found a bug where if Mm-hmm. where it was like open redirect and Mm-hmm. not open like a Mm-hmm. iframe injection and also an SSRF. It was basically when I click on that type of retrail retrailer. There was in URL something like URL and the Google Maps link. And when I changed it to evil.com, it just appeared the evil.com page. And Basically, it was a that was reflected like, one. yeah, it was basically, you can say, SSRF. And if that guy have access, I mean that particular internal areas, we can just use internal local address to retrieve. I don't know about that much deep, but yeah, it was an SRF and Mm-hmm. I got paid as well. So, okay, You are redirect URL. First thing we got is open redirect. We redirect can try URL. that. Okay. Firstly, you have to mess on Mm-hmm. that thing. I think we can hunt on Bowers Will. Wilkins.com because they are looking very good. Uh, okay, let's create an account. Instead of maybe things. Let me create. Let me do that. Let's see. Alert. Yeah, yeah. Absolutely blocked They me. are using Cloud Player. Yeah, try to that. Try to that. Try to Oh, hide this. even
My script was not. I mean, they are just blocking the alert, I think, because my script was not even. No, they I think checking the special character. Yeah, that must be something here. If I do that. No. Uh, what if we try an external URL such as evil.com? No. What we can try is here it redirect URL. Uh, First of all, this and dot evil.com. That it's open redirect there. Create an account. Then just put everything. Okay. Uh, just leave it right there. Phone. I don't guess I have phone for that. Exploit Scout. Yes, we hack. And whose phone is that? It's basically temporary when I use for temporary website. And we have to use strong password as well. And let me remove that from scope and add in scope. Scope example this one. Add subdomain. Wait. Create an account. Okay, no, this No, one this is not. is we need this post one. As you Yes, can it is. see, there is something we have that one. Mm-hmm. Why Maybe we can send it to reader. Sorry, repeater. inspector? We can see that evil.com. Now we have just to see if the website uh, believe that it is his own domain and trust that one because I can put the evil.com directly, but Mm-hmm. mostly likely they will just block that one. So what Yes. did I just use their own domain, then I do dot evil.com, so it can look like it's their own domain that can. We'll just have to fool the server. Yeah, and there is CSRF token. Okay, so that can be okay. Cloud error, what is that? That's just in case, let's send repeater. By the way, there is captcha or something, can be expire or something. Okay, uh we Accounts. got a query. Okay, they are using that. That work that we open redirect for sure. This is login show registration message true. Hmm. What is that now? Okay. Window related text accesses. Let's say they're having something like your account was created. Please check your email shortly. Okay. Now the thing is that mostly if I open my email, most likely they will send the evil.com link there in my email for verification. If that Mm-hmm. happens, that's a bug. It's Yes. very and also there's something. Oh no, we can't do that. But if I do false, I don't know What is this? what is. It is show registered message. Is it false? We can try other things there, but yeah, we have to verify that first. Also, sometimes there must be like error message and all of these texts where we can test for HTML injection and accesses. That's the single accesses and HTML injection and error message. Mm-hmm. And I'm having a lot of emails. Seriously. Confirm your email. Okay, let me copy that. Your Okay, wait. There is no, something. And to vowel links. no. The If I have to understand it well, we have to use URL decode. I mean, decoder. Okay, let's just click on decode. OEM. What does OEM means? Is the email code. Uh, Next thing is that I want to know like if I create a new email with the same type of
No, yeah, with the other type of email like expertscout at the rate via hackerone.com, something like that. And if I change that email, will that uh, one will get verified, Verified or not? or that code like the token will enforce not to Yeah, do or we that. can reuse it or not. Okay, we can try that. Let's Hmm. let's just try it. If that works, then that's email verification bypass. It's likely. Just add this anything I can add here. I just can create something any random character. Okay. So let's go create email on and suggest string password and can just intercept the request between them. Let me see my box on. Yeah. You can hide this So pop-up too. uh, an experience with that. How I can do that? No, How I can do that? If I do that, if you like that, can't hide it. you try to click on If I close. close, Yes, close it. click on close. Yes. Okay, it's now fine. Um, if I now let's Okay, just intercepted. see that. Just wait. So, so is the message true? We got another one. Email. Let's just type. Sorry. Let's just take that email too. Email verification link too. And let me open a notepad just in case. Do this one too. Analyze both. Very different type of. Just go with that. Okay. Same. We can just have this email and verify like Q series. Only Tokens are code is not the the different, same. other than everything Yeah. same. The others are just so. Does that code only rely like something like verification that it is valid, or you can just confirm that email? There is Hmm. no to the server like telling to the server that code is just the key, or Hmm. it is just bind with the email. If we change the email, nothing will happen. Let me just try to do that. If I do that, copy that one. We need to encode as well. Sorry. Do we need to encode it? We decoded it, no? Uh, uh, we can just do it. We don't have to encode it Okay. again because the browser will automatically encode it. There's no, I don't think so. It is like that. Hmm. We got something like that, but nothing happened. Actually. Can we check in the above what is the response in the history? Yeah, we can check. We can check that first. Exit. Go. Let's just try it. Let's just try to. Your voice is breaking. Oh, okay. Let me just see that one thing here. Okay, they're using that. Okay, let's just intercept that request. Let's have a look. Okay, we got in Hmm. verification success. Okay, verification success is here's false. Hmm. Wait. This verification success is false. What if you make it true? And we have a message, as I told you, we can try for we can try for XSS here too, and that's the goal, man. Let's just do that. If the API, if the account gets verified, that's a bug. We got a bug for sure. And let's try this here too.
testing. What's the just get a Chrome. We got an PO2. 302. What is the location by the way? It's login. Okay. URL. Let's if I now Try to log in. I try to log in. If it's got login without asking verification, then we got it. Okay. Let me click on login. Let's check No. your email for. Wait. If there is email confirmation link, what if we change the origin or something like in the confirmation? If I click on again login, we have something account login email, login password, says RF token, G capture response, URL, and that post request. It's like dev class confirm your account and everything. The query string is our URL, HTML, and verification URL is own, is send verification email. Email.com. Okay, email.com. Copy that just in case. We are having okay. Let's just use that. Verification email.com. Email.com. Yeah, apologize. Okay, it must be using for post request, not get. So yeah. Let's see your email now. Must be an email. No. I don't know why they're not sending an email. Okay. Let's just try that one. What the behavior of that one would be if I intercept the response. Like we have to check the Yes. valid How? behavior. Yes. Yeah. If And the here's something interesting. This is account verification, status, success, and true. everything. Let's just copy that. Like the whole request to central. It is just in case. Repeater, we can save it. Yeah. And say that it's again redirecting us. Here's the thing. I'm just having, but it is it is like get request. Mm-hmm. I don't think so that can be sent to the server. It is just a get request. Hmm. And also, uh, we can try response manipulation. To be honest, Yes. you remember like if got let me first that got success. So what is happening here? Click on login, giving direct the authentication token, or it will give something else first, like is the account verified or something. Account Okay, login. so here's the thing: account success true and verification login email redirect URL registration False. is false. I don't know why. They have they set cookie. I think that's the thing, but it looks like base 64. Let's just try to see. No, No. it's like encrypted base 64. Mm-hmm. We have to find a key for that, and they just set up our session ID. So yeah, no need to put that registration false, and we are logged in. I think we have to like registration true here with something. I don't know why my keyboard is not working. We fix it. Okay, it's perfectly fine. Let's see registration true. Should observe everything. Okay. To be honest, nothing happened. First of all, let's see. Let's explore this website. It's category. Find your true sound. Okay, it's true sound. True sound. So, okay.
So let me see where this all. There is CD and storing Yes. the images and everything. Uh, No, it's Log no. not for log. So Mhm. I don't think so. We have to No. do something here. Just upload. Waiting for Google to load. Oh no. Let's just leave that. Let's say we need this, and also let's just intercept the request and proceed. Hmm. It's not backing request, I think. No, it's a It's client side. client side. Yeah, it's client side. Oh, okay. Stop. Add to cart. Maybe I'm. Wait, why it's not working? We can try the price manipulation as well. Yeah, we can try, but first thing I'm not saying why I'm getting the GTM only. Maybe because of the traffic is being on this We power added the space. subdomain as well. Yeah, I did that. No, you can see that. It includes subdomains. No, we are I don't know receiving what's the happening. GTM interception, etc. because we added the subdomain. If you want, you can remove from the scope. It's a That's not the GTM dot. problem. Like, yeah, it's GTM. Um, I don't need that. I think. I don't have experience on GTM how they work. Mhm. So all password paths, SSID, you can say currency. You can just try to change currency to be honest, because I don't know, let's see, currency or something. Okay, there is event from the Google Ads. Google Analytics. Select. I don't think like playing with GTM will help us. And Yeah. So about us, they're using HTML, HTML. HTML. They're using yeah, they're using literally HTML. So most probably they are using PHP for the backend. Yeah, let me see, let me see, let me see. Yes, PHP mostly. And for the backend, I think they use PHP. For the client It's side, not mentioned on they're using F the payment format. processors. You can try to bypass that. And let me first read the page source code. So, app verified JS. Lot of CSS. JavaScript. There is something search about search, how to search, and I am interested on main.js, the main one, because main one can contain a lot of sensitive information. Uh, JS beautifier maybe JS beautiful. again. Beautifier code. It is big, I think. Hmm. JS big. That's why I think my my browser is not If you able have to. Visual Studio, we can do that there as well. No, I don't have Visual Studio right now. I use Cursor. Yeah, but you can just search it right there. API mostly if you don't hardcode credentials APIs, and you can see data API handler because they can expose their APIs. I saw a lot of people that they are able to expose Mhm. their own API keys. And if I saw token, the tokenize function Tokenize. slash o or something like o uh, secret secret so that is a main No. JS. We have if we go to do that, right, there's a function ajax URL method get success Get method. function error function to exports add to card Add to cart. notification success. Basically,
These are just, I think, a load. How does the API work? We can't get anything from here. So, yeah, we go Yeah, back, this is but mine got power. Yeah, my browser is like getting will die getting from stuck. that thing. Just leave it. My browser will die from that because it was very big. The campaign banner. Okay. There's something. Okay. Dimware ID. Okay. Login status. Something like that. And literally they are exposing email and said I don't think so that can be risk. User ID. So we do there. Let's say API keys. Okay. Public API key. Hmm. Wait. Session ID. Why the hell is session ID there? Something As well as for the public. Affirm. Affirm is their payment processing partner. Affirm, yeah. This is Affirm. Affirm. Affirm config. You can just search Affirm config. Enabling the payment method, but probably API is available. You just copy that. So like everything here. Search yes. Quick guide. Public usable environment settings. Just go to the A. Let's tell you. It looks like a widget configure, but this is simply by using the applicant buy now, pay later functionality on your website. Your unique identifier connects to front the source URL of a unique string used to track specific user session for checkout cost. Okay, it's our, not someone else. Mm, you can try for API. This is Apple, and wait for the OIT to load. Nothing is there. This token. Okay, the token URL. Oh, you got a token? No, it's like just for cache status secret. So we I mostly when I come to a website, I just check their source code for, you know, Mm-hmm. and then I try to like try the search functionality. Okay, it's reflecting. It's reflecting. Let me see here. Test. It's reflecting here. Um, okay, it's Search. reflecting here, but it's like very hard, I think, to bypass it. Mm-hmm. This type of things. Okay, okay. We can try for, okay, there is lang, which is no. What if we try here something part tribe or so? Because most of the time, okay, blocked. You have blocked. Nice. Search button. Search button test. Okay, search button test. Anything there? Query. What about application Testing. level DOS? Um, because Yeah, we can try to. application level DOS is something different from other volume-based DOS. You can try from not that much big, you know, if something happens. Let's say 5,000 characters. Copy that and paste right there. So likely say not found, URL not found. What happened? URL not found. Seriously, you just search it right there. You are not. Uh, the requested URL was not found on this server. This is little interesting and confusing. Like, why the hell is like requesting for URL? Wait, Just said it. you must be kidding. Like, you just have to URL. To put that much big string, it will say the requested URL was not found on this server. Let's going to server side. Mm. Let's big our payload. Big our payload. Like 50,000, it's like 50 KB.
Double click on. Can try that. Oh, Oops. oops, something went wrong. Refresh. Okay, so you see that when I change the input, it give me second error. Mm-hmm. Like, oops, something went wrong. The first one's like we can't find. So it is going to the server side, and it's very funny. You can check in Um, Burp as well. What's the response? yo. Why I'm able to like? I don't know why. Let's leave that. Um, uh, like I'm afraid of that. It's something that went wrong. 500K. You wanna I just just kill the want to. server. No, not that much easily. It will just cause some. Oh, stream close or fail to close Refresh it correctly. once. It will work again. If I off the our proxy too, it says URI too Too large. large. And Nginx is throwing the Yeah, error. because and you what? And for about a second, you can see this one. This one is surprisingly very funny, and it is very like if I click on search, you'll see literally I'm frozen. What the hell? Literally I'm frozen. Something went wrong. You see that? If I click on refresh Nothing is again. happening. Let's just capture that request. What's it Yeah. doing? Click requesting for refreshment. Oh shit! Very big. It's very big. It's very big. The host and we have search button. What if we fill the language too here? Language to Yeah, because you remember they're accepting non-language. It says you are right or wrong. So they're protected against application level DOS. Your torrent protect test. So I don't think so that will be mm-hmm. enough to do that. Then we have color black. Hmm. Also we have that we are using again an HTML. To be honest, if I zoom in, that image. Now this is not on CDN. You see that, and also uh, there is something like this. What is Width that? So, SW should be greater than 3000. out of range. 3000. Less than Yes. 3000, I think. Okay. Let's say just image. What if I just open the folder? It says the application only supports PNG in this type of formats. Files on. Yeah, this type of formats. So yeah, we can't do directory, do something like that. But image. Okay, URL no URL not found. To do URL something like parameter. There must be a parameter for URL. Hmm. Right. Each. Not found. Okay. I'll just keep giving that error URL not found. Okay. And there is if I change the green to green, it will send a green color. The color Yellow color. parameter is changing. Yeah. Is there any area where the color name is being reflected or something? So Here. you can sustain. Wait, let me just do black. Like Sorry, let me just open it again. Black. Okay, but it's on URL.
Alt. No, not there. Let's give a chance if I do something like JavaScript. It must be like block from wave. Yeah. No, Cloudflare is What working. what if I do something like this? It is still black. Color. Default color because What if we change the quantity? Something fine with each other. Let's use the quantity recreation or something. Add product card. We have something PID. That's product product PID. ID. Yeah, product ID. And options. Options. We can try here something. This repeating just in case. Yeah, There is quantity. If I change the quantity to 9, okay. Uh, next, make what is one. already in card? Has bonus. Also, we have to try uh, responsive inflation to with that. And you can see there is. Zero. अच्छा, this is shipping You related. can just copy that most of the time. Oh, cart item 0. Why? We haven't added it. If we do, yeah, I think that's because of this thing. Checkout. Maybe we can try one checkout. We go to the name. Okay, address. Okay, shipping. Either Doom accesses or something. Yeah, currently we Like, are in the shipping. yeah, the shipping pay. And instead of that, what if we do like again the alerts and It will go in the in URL parameter. customer? It was a customer. That was test. No, it won't work Yeah, because okay. whatever you will type after the hash, it will go in the in URL. Yes, that's right. On error we can. If they are trying to render that to the file, keep trying to address one. Okay, let me capture the request of the address to. I think it's a third party for the address they Yeah, are using. it is third party. Let's see here. They're using e-commerce or Shopify and A/B testing Verify and Bootstrap. Okay, it's third party. Try this. You can try this. Try this. Try this. Anything. Okay, next is payment. Overnight shipping. I do next payment. Submit shipping, US checkout shipping, and there is original shipment UUID. Okay, so what I'm thinking, there can be IDOR, like there is shipment UUID. Maybe Change this shipment UUID to any other one. You can get an IDOR. Also, there your are shipping CSRF address. token. Okay, we have CSRF token. But I We don't can think so try it that works too. on. We can send it to repeater, then check it out. Yeah, we can better check it out. And let's see. It's saying different shipping ID. Okay. Valid from valid. Yeah. Let's look at okay phone number.
Uh, what else? I think that next different already. We got this. Okay, there's a card. See, and I want to see is there card. Most of the people don't make the offering. Let's see. Next review. Wait. Place an order. Okay. Mhm. I'll check the offering and place an order. Mm, yeah. Then place an order. Okay. There is a post request with that place an order. Must be something. Okay, 200. Your code not be possibly in different payment settings. Okay. I just did something like crazy. Like the payment system here, why it's like off frame if I use that email address and my personal details. Okay, maybe like their phone number and everything. I don't know how the offering was. Let's try this hard one. Anything. Just insert that request extra review. And, we have address selector again the same ID we can try for that. And we go to New York CSRF token. ID and DFM. Basically ID. Hmm. Let's just copy the 200. Okay. Save We card. can try either. Yeah. Yeah, we can try ID. Oh, I don't know how they're able to like how we got that. Seriously, Now this why is the the main hell? part. Yeah, they were like you say could not be possible Full system. Um, okay, payment details are wrong. okay, you can. By the way, I think that's it for me because I have to sleep, go and sleep because I'm hunting from from 5 a.m. to like 4 a.m. Still Okay. hunting. That can affect me. And by the way, you can try these both things that I showed. That one original shipment UUID Yes, by yes, I'll check it Cross. out. You can try this one. Maybe Mhm. you can get an idol, Yes. hopefully. And can you ask them anything to your viewers, like anything about Yeah. any question? Hi, and if you have if any question, we can ask him. Otherwise, he is be dropping in next 2 to 5 minutes. By the way, thank you so much, Ahmed. Thank you so much for showing us your No worries, methodology, how you proceed. We got to learn a no lot of from worries, you. It was really nice meeting with you. no worries. So basically, There you regularly hunt or you are just are are you currently I working somewhere or regularly I regularly I hunt okay, regularly, okay. and my friend had to set gaze YT. Okay, what's the there are specific tags and attributes allow blocks dangerous content, so it removes disallowed tags, suspicious element, block content types. That fully explain the situation we are in. There are also intentional accesses things, but they have sanitization in place already. WAT inner HTML, text content, and everything. Okay. Okay. Uh, thanks, guys, for inviting Yeah, me. thank you so much, Ahmed. That there are no question from my any of my viewer, but yeah, they are thanking you for your methodology Thank you and too. all the things you have said with it. Thank you so Yeah. much, Thank you. I would love to connect again Oh, with you. Maybe yeah. we can discuss Same. Yeah. regarding that same. So yeah, Yeah. thank you Yeah. so much, Nice to-
and have a great day. Okay, bye. Bye. Good Bye. night. Okay, bye. So yeah, guys, मेरी खुद की आवाज आ रहा है कहाँ से आ रही है? 1 second. I think yes. Hello. अभी भी आ रही है? 1 second please. I think आप लोग 1 second. हेलो हेलो आई थिंक आप लोगों को अब मेरी आवाज़ आ रही होगी, एक बार प्लीज़ ड्रॉप कर देना. हेलो, नेटवर्क इशू. Yeah, thank you so much for joining everyone who has recently joined us. It was really nice connecting with Ahmed. और Ahmed ने हमें बहुत कुछ बताया how he proceed, and I'll be very honest, there are a few things that I got to learn from him as well. So yeah, it was really love connecting with him, and maybe soon we would love to connect with him as well. And thank you so much all of the guys who has recently joined, or if it's your first time, please don't forget to like, share and subscribe. And yeah, now I will be taking 5-minute break because it has been, I have been sitting for last approx 3 hours. So I'll be taking 5 to 7 minutes break, but I'll be back. And उसके बाद जो आप लोगों की query है, each and every one, I'll be going through each and everything, and then we are gonna continue with the session. Samiti creator, thank you so much for joining everyone, whoever is it. Hi Krishna, hi everyone, hi Prabal. अभी यार हाँ, sure, I'll be back in next 5 to 7 minute. I hope आवाज़ तो आ रही है ना मेरी? खुद को चेक कर लेता हूँ. Yes, आ रही है. So I'll be back guys next 5 to 7 minutes. Please कहीं जाना मत आप लोग. And we are gonna discuss a lot क्योंकि I got to learn a few things as well. And I'll be max 10 मिनट का टाइमर लगा के जा रहा हूँ, but I will try to come back as soon as possible. So yeah, see you guys. Please wait करना.
हाय एवरीवन, आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी मेरी। हाँ जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार प्लीज़ हाय हेलो तो कर देता, आ रही है कि नहीं? यस। सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को सेशन ये वाला? प्लीज़ बताइए अपने अपने व्यूज़ क्या है आप लोगों के। चलिए एक काम करते हैं। सबसे फर्स्ट आई फाउंड vulnerability which is for Firebase API की डिस्क्लोजर। सबमिट करो, बट इम्पैक्ट इम्पैक्ट के बिना मत करना भाई। मेक श्योर कि तुम इम्पैक्ट वगैरह दिखाओ। स्मिथ क्रिएटर मत सर भाई, ये सर वगैरह मत बोला करो यार, आई डोंट वांट, आई बी वेरी प्रेस्ड। आई एम यूजिंग वास्प जेब। सही है भाई। हाँ वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। मैंने वर्क पे ज़्यादा काम किया है तो इसलिए मुझे ज़्यादा तो लगता है भाई। वास्प जेब इज ऑल्सो गुड। स्मिथ क्रिएटर बस स्टार्ट यार, जस्ट गिव मी 5 मिनट यार भाई, थोड़ा सा दे दो। बताओ सेशन में क्या अच्छा लगा जो बेसिकली हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, या समथिंग दैट वी डिडंट डिस्कस अर्लियर। मुझे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी दिखी, बट आपके पीओसी क्या है? अवेलेबल फ्री स्कैनिंग वेबसाइट, यस। हाँ, जेब की मदद से कर सकते हो तुम, काफ़ी सही है। बट बात ऐसा है यार कि थोड़ा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा सही है, बट दोनों सही है यार। अच्छा है जेब की। बट अब मिनिमम स्पेसिफिकेशन नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी, कैन यू रिकमेंड एनी लैपटॉप? भाई बजट बताओ पहले आप, आपका बजट क्या है? अकॉर्डिंगली आई सजेस्ट। माई जर्नी वीडियो, लेट्स रीच समवेयर फर्स्ट। अभी नहीं भाई, अभी तो स्टार्टिंग का ऐसे भी नहीं है ये। हमने ये जो स्टार्ट किया है ना, लाइव बग बाउंटी अंटिल 1 CR, इसका हम 30% मिनिमम तब करेंगे। सी सा फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी ये सर वगैरह आपने चला रखा है ये मत करो यार, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड या थैंक यू सो मच, पहली बात सभी का ज्वाइन करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच उन सभी का जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है वीडियो को। अगर आप में से किसी ने नहीं किया है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब। आज का टारगेट है हमारा 850, और लाइक का बहुत कम है, अभी 24 पे ही है। इससे ज़्यादा तो कल हमारे आ गए थे, जबकि आज का तो सेशन ही बहुत अच्छा था। मुझे तो लगा था कि आज हम छप्पड़ फाड़ देंगे। आज के लाइक कम है कंपेरेटिवली।
जैसा हमारा जितना प्यारा सेशन गया। कल वाले में हमारे 39 हो गए थे। डेट 3 सबसे बेस्ट था, 50 प्लस चले गए थे। बट आज का भी टारगेट है 35 का, तो लेट्स सी। और क्या हम 850 तक पहुंच सकते हैं? पक्का ना? हाँ भाई पक्का, 101%। जब हम 30% अचीव कर लेंगे ये वाला हमारा बग बाउंटी वाला गोल, तब हम करेंगे, अभी नहीं। ब्रो इंटरनल मेल्स को स्पूफ करके 101%, अगर तुम वहाँ के उनके स्पूफिंग के थ्रू अगर तुम हाँ हो सकती है कि तुम्हारे पास। देखो तुम सिर्फ पहले तो ये ट्राई करने की कोशिश करो कि उससे क्या क्या तुम डेटा निकाल सकते हो, क्या क्या विजिबल है क्या नहीं है। भाई अब स्टार्ट भी कर दो, हम जस्ट 2 मिनट रुक जाओ भाई मेरे। 31 है लाइक। अच्छा, पता नहीं, ये 24 दिख रहा है, 25 दिखा रहा है। मैं भी कुछ कर लूँ तो डेटा वगैरह कई बार अच्छे से नहीं दिखाता है। हाँ 26 है भाई। मैं भी पहले ज़्यादा थे लोग अनलाइक करके चले गए, आई डोंट नो। 20 लोग देख रहे हैं। बजट 85 है। बजट का आपका अगर 85 है भाई, फिर तो काफ़ी अच्छा आ जाएगा। 26 लाइक है मेरे। और लेट मी शो यू। मैं देखो जीपीयू अच्छा होना चाहिए उसमें। रैम हो मिनिमम 16 GB। मिनिमम 16 GB से नीचे तो मत जाना यार। और अगर 85 है और लैपटॉप ही चाहिए, हाँ ऐसे वो नहीं चलेगा। पीसी वगैरह बिल्ड करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसको तुम कल इन फ्यूचर बहुत अच्छा कर सकते हो। HP Pro 330। देखो अगर तुम्हारा बजट 85 के आसपास है तो फिर तो तुम डेल की जी सीरीज ले सकते हो, ये भी अच्छा है। हाँ देख, लेट मी शो यू स्क्रीन। स्क्रीन दिखाता हूँ मैं। ये ले लो भाई, जी सीरीज ले लो। बेसिकली तुम्हें गेमिंग इंजन, गेमिंग लैपटॉप ही लेना पड़ेगा अगर तुम्हें वो चाहिए तो। अच्छा है। 16 GB DDR5 रैम है, लेटेस्ट। और उसके अलावा जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो भी अच्छा है। SSD 512 है, बहुत है। बाद में तुम्हें लगा तो यूज़ के बढ़ा लेना। विंडोज़ ये सब कुछ है, और RTX से 3056 GB। बढ़िया भाई, बढ़िया चलेगा ये। अच्छा है लैपटॉप। अब इसी बजट में अगर तुम्हें मतलब ये स्पेक्स अच्छे हैं। प्राइसिंग वाला तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट ये स्पेक्स अच्छे हैं। 16 GB रैम है, अच्छा है, ठीक है। और i5 है 13। HX है, पर हाँ ठीक है चलेगा, HX है। एसर प्रीडेटर भी आता है, हाँ एसर के पीछे आते हैं। आसूस का भी तो है ये राइजन 7। राइजन ठीक है वैसे, 3054 GB है, पर 512 GeForce 3050 है ये भी। ये देखो पर 1 लाख के आसपास है। 35 तुम्हारा बजट है तो फिर तो 70 में तो आसूस का ये भी आ रहा है। फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड फ्यूचर में पड़ेगा ना भाई, इसलिए तो मैं कह रहा था पीसी में जाओ अगर तुम जा सकते हो तो। मैंने भी वही किया था, जैसे भी पीसी बनाया था मैंने, बट उसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है। तो कल को कोई भी चीज़ हमें यू प्लग इन प्ले वाला सीन है, उसमें कभी भी कोई निकाल ही कर दिया। इनमें ऐसा नहीं होता है। ग्राफिक वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत रट्टे रहते हैं, या लिमिटेड चीज़ें रहती हैं। तो ऐसी जगह पे तुम्हें इशू आएगा। वरना स्पेक्स तो इसके भी अच्छे अच्छे हैं, 3056 GB। सही है। इंटेल कोर 210। नहीं ये मत लेना। आसूस का आ रहा टफ। जी सीरीज, हाँ जी सीरीज अच्छी है, मैंने भी सुना है एक दो लोगों से।
ये तो 87 का पड़ रहा है, बट ये तो और अच्छा है भाई। 4050, 16 GB 512, ठीक है। कोर 5, इंटेल कोर 5 प्रोसेसर। देखते हैं क्या थ्रेड वगैरह है। 8 4 प्रोसेसर थोड़ा सा कम लग रहा है, हल्का है। 8 को 12 थ्रेड। देखो, दो चीज़ें मेन है जो तुम्हें देखना होंगी कि उसका ग्राफिक कार्ड तुम्हें चाहिए अच्छा। 6 GB बढ़िया है, बहुत कम नहीं है, सही है भाई, बढ़िया है, मज़ा आएगा तुम्हें काम करने में इस पर। जब चलेगा ना कोई भी हैशकेट वगैरह, ये सारे टूल्स वगैरह चलेंगे, जब हैशिंग वगैरह पे काम करोगे तुम, हैश वगैरह ब्रेक करने की कोशिश करोगे, तो जो आवाज़ आएगी ना, मज़ा आएगा उसमें। ठीक है, एक बार मैसेज पढ़ लेते हैं इंटरनल। तो सिफत यार, ये ट्राई करो पहले, वो क्या क्या डेटा एक्सपोज वगैरह कर रहे हो, कि हाँ क्या क्या विजिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट जितना ज़्यादा अच्छा दिखा पाओगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। बजट 35 31 है, एक्चुअली में 31 डिस्प्ले हो रहा है, पता नहीं यार, मुझे 26 दिखा रहा है। स्टूडियो में भी ये भी होगा, चलो जो भी है कोई ना, ठीक है, क्या कर सकते हैं। हम्म। 5 साल से ट्राई कर रहा हूँ, आई एम यस भाई। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। 5 साल से ट्राई कर रहा हूँ, बग के लिए एक भी ढंग का बग नहीं मिल रहा है भाई। ये डिपेंड करता है तुम टाइम कितना दे पा रहे हो यार, खुद को कितना इम्प्रूव कर रहे हो, खुद को कितना लर्न कर रहे हो। करते क्या हो भाई आप, ये बताना जरा, आपने क्या क्या किया है? कोई सर्टिफिकेट, सॉरी, कोई सर्टिफिकेशंस वगैरह किया है क्या, नहीं है? ऐसे प्रोजेक्ट भी अच्छा है, हाँ। एक काम करो, बग हंटिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन बता रहा हूँ, तुम अभी बिगिनर हो, तुम एक एआई बनाओ जो सारे बग हंटिंग को ऑटोमेट करे। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। तुम्हारा एआई तुम्हें निकाल के दे देगा तो फिर हर कोई बना के एआई बनाता और छोड़ देता भाई, ले भाई, हो गया। ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू वर्क, मैनुअली करना पड़ेगा, एआई कुछ नहीं कर पाएगा। एआई पे जाओगे भी तो तुम्हें ये सब्सक्रिप्शन, प्लान सब्सक्रिप्शन, दुकान सब्सक्रिप्शन। फ्रेंड के पास है, मस्त है, टफ का, हाँ अच्छा है वो, टफ का अच्छा है, जी सीरीज अच्छी है। ब्रो आसूस एक्सपर्ट बुक फ्लिपकार्ट पे चेक करना। आसूस एक्सपर्ट बुक, एक्सपर्ट बुक अच्छा। 67, ठीक। इंटेल i5, यार i7 पे चले जाओ अगर मिल पाता है ना, थोड़ा सा देखो। स्मार्ट ट्रिक्स वगैरह पे चले जाओ, एक वेबसाइट है स्मार्ट ट्रिक्स ही है ना शायद, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, स्मार्ट ट्रिक्स पे जाओ, लैपटॉप कंपेयर करो दोनों। लाओ, कौन कौन सा बोल रहे थे तुम, अभी कंपेयर कर देते हैं। लो, ये था ना तुम्हारा P1, इसको कंपेयर कर दिया। और दूसरा आसूस V16 एज एन एग्जाम्पल। और अपना डेल सी जी सीरीज में था ये वाला, नाम वाम नहीं है क्या कुछ? ठीक है, अल्ट्रा 7 नहीं, इतना तो नहीं है। जी सीरीज वाले का नाम क्या है? नाम तो होगा कुछ। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, चलो छोड़ो। इन दोनों को अगर तुम कंपेयर करते हो तो यहाँ पे सब कुछ तुम्हें बता देगा, देखो कौन सा ज़्यादा बेटर है। अभी हमने दो कंपेयर किया, आंसर से एक्सपर्ट बुक P1 और ये तुम्हारा ये V16, ठीक है। इसमें डेडिकेटेड मेमोरी है, इसमें नहीं है क्या P1 में? ऐसा नहीं हो सकता। तो इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं बता रहा डेडिकेटेड, अगर ऐसा नहीं है तो बिल्कुल भी ऑप्शन मत रखना इसको, सोचना भी मत। i5, ठीक है। MH, ये तो फालतू की चीज़ें, फिंगरप्रिंटिंग वगैरह, इनसे तुम कोई भी फिल्टर मत करना, ये गुड टू हैव है बस। इसमें नहीं है भाई ग्राफिक कार्ड, आई थिंक, जैसे मैं देख पा रहा हूँ।
अदरवाइज इसने होम पेज पे दिया होता है जेन 4। ठीक है ना, ये रेगुलर लैपटॉप है, वैसा नहीं है, इसको मत लेना। इथरनेट वगैरह ये यूनिक फीचर ये भी गुड टू हैव, वरना कोई कोई ना, छोड़ो ये सब कुछ। तो यहाँ पे आके कंपेयर कर लेना तुम, तो तुम्हें डिटेल में सब कुछ ये बता देगा क्यों है कहाँ है, दोनों को ईच एंड एवरीथिंग कंपेयर करेगा, एक एक चीज़। जैसे देखो प्रोसेसर कौन सा अच्छा है इसमें से, स्पीड क्या है प्रोसेसर की, एक एक करके। ग्राफिक कार्ड ये देखो, इसमें इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं है भाई, P1 में नहीं, P1 बिल्कुल मत लेना। आसूस लो, आसूस के कंपेटिवली इसी से रिलेटेड तुम्हें और मिल जाएंगे सिमिलर। ये देखो इसी में बता रहा होगा ऑल्सो कंसिडर करने के लिए तुम्हें। नहीं तो होम पे जाना और यहाँ पे सर्च कर देना। तुम्हारा बजट है अबव 60, तो ये आगे देखो S14 आ रहा है, जिसमें नहीं है। ये देखो लेनोवो है, इसको कंपेयर कर सकते हो तुम। ठीक है, अब ये कंपेयर कर दिया तुमने, और साथ में अच्छा है ये विक्टस 15, इसमें 6 GB ग्राफिक कार्ड, इसको कंपेयर कर दो लो। दोनों हो गया, इनको चेक कर लेना। इन दोनों में देखो ये ज़्यादा अच्छा निकल के आ रहा है, HP विक्टस। रीजन, CPU अच्छा है इसका, हेक्सा कोर अच्छा, चलो इसके ऑक्टा है बट कोई ना चलेगा। थोड़े बहुत एक बार यहाँ से फाइनल कर लेना कौन सा बेटर, कंपेयर वगैरह करने के बाद उसके बाद तुम इनके रिव्यूज़ वगैरह देख लेना। ठीक है, तो ये सब तुम कर सकते हो। हम्म, ऑफिस एग्जिट लैपटॉप नहीं, वो उसमें नहीं मिलेगा भाई, उसमें जो इनको चीज़ चाहिए ना, GPU वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं उसमें। नहीं, मैंने भी लिया था, चलते बढ़िया है बट उनमें GPU वगैरह कैसे हुआ। द हसन गेमिंग, यहाँ भाई स्टार्ट कर रहे हैं भाई। IM यस, गूगल के बग हैं भाई आपके पास, और सबमिट नहीं करना है। सही है भाई, बढ़िया, मजे करो फिर तो। यानी वाले बातें हैं भाई ये तो। कौन ही होगा वो महाशय जिसके पास बग निकलाई होंगे और वो कहेगा कि वो इसे सबमिट नहीं करना। भाई माइथोस AI क्या इम्पेक्ट करेगा साइबर सिक्योरिटी में, ये कंपनी अपना AI बेचने के लिए हाइप बना रही है। हाइप ही है भाई सब कुछ। अगर आपने डे 1 पे देखा हो तो हमने इसका जीता जागता प्रूफ भी देखा था भाई। एक साइड हमने ऑटोमेशन टूल चलाया था जिसने 2 घंटे में एक OTP बाईपास नहीं कर पाया था, और हमने कर दी थी 20 से 25 मिनट में। तो बस कहने की बातें हैं, बस AI तुम्हारी हेल्प कर सकती है STAT वैस, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती वो। हाई फाई, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। कुछ लोगों के सब्सक्रिप्शन के नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आते है ना, कई बार स्ट्रीम एलिमेंट्स इशू वगैरह क्रिएट कर देता है, तो ऐसा मत सोचना कि मैं आपका नाम नहीं लेता। ठीक है, हरमन नाम का ये एप्लीकेशन था जिस पे हमने स्टार्ट वगैरह किया था। कल भी हमने इस पे काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, कल हमने इसका सब डोमेन वगैरह ये सारी चीज़ें की थी। प्रोफाइल ऑन गिट, आई एम 16 प्रो प्रोग्रामर। भाई काम करो, अपना लिंक वगैरह गिटहब का ड्रॉप कर दो, डेफिनेटली आई एम गोना गो इट। द यूजर नेम इज मिट सोनी, थिंक वेट सही होगा भाई। अपना वो ड्रॉप कर दो यहाँ पे, यूजर नेम, सॉरी पूरा लिंक ड्रॉप करो।
जैसे टाइम मिलता है होना चेक इट आउट। ठीक है, तो बातें हो गई बहुत सारी, अब चलो काम पे ध्यान देते हैं। इस पे हमने कल ध्यान दिया था, कल हमने इस पे स्टार्ट वगैरह भी किया था। इसको 3 फाइंडिंग्स वगैरह मिली थी। पेंडिंग वेरिफिकेशन, स्टेप्स गिवन, ये इसको हम कॉपी करके फॉल्ट, ओके। हम्म, ठीक है। गाइस आई थिंक मेरा सर्वर वगैरह कुछ इशू दे रहा है, जीपीयू इशू दे रहा है, सो होपफुली लाइव अभी चल रहा होगा। हम्म, ओके। आई डोंट नो क्या हुआ, क्रोम अचानक चलते चलते बंद हो गया था। वांट्स माय पीसी रिव्यू वीडियो, श्योर। यस वी हैक का केवाईसी में कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, आधार एक्सेप्ट नहीं हुआ। ऑल्सो व्हाट गोज इन द बीआईसी इन पेमेंट सेटिंग। आई थिंक यस वी हैक में पासवर्ड मांगता है केवाईसी के लिए। पासपोर्ट, लाइट, ड्राइविंग लाइसेंस, नेशनल आईडी कार्ड, इनमें से कोई भी चलेगा।
ठीक है। कुछ तो मिला है हमें, लक्स वगैरह दिए थे वो हम सबमिट कर रहे हैं। किस चीज़ की पीडीएफ चाहिए भाई? ठीक है, अगर डेव को किया हमने तो सेट को किया आ रही है, इसको किया तो 401 आ रहा है। ठीक है, किस चीज़ की पीडीएफ चाहिए भाई? लेट मी लॉग इन है। नोट पैड पे मैं इसको कर लेता हूँ सेव। गाइस एक और अनुभूति मिली है मुझे। लेट मी चेक अगर हम इसको सबमिट कर सकते हैं कि नहीं।
Bro, the links are not coming in the chat. Can you send it using the username on the GitHub? हाँ, sure, I'll do it, bro. No worries, maybe in it's. But just give me time. मैं थोड़ा सा और किसी बात में लगा हूँ उसके बाद. Nothing. I'm just searching a few things. Bro, TryHackMe का पेड रूम कैसे नहीं यार, उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा भाई. Sis, okay. I first of all welcome all जो भी अभी recently join हुए हैं. How do you do the WhatsApp chat type of thing? I didn't get your point. नहीं, पहुंच नहीं है भाई. मैं कुछ थोड़ा सा देख रहा था एक्चुअली ना. मुझे एक क्लाउड ने कुछ बताया है एक बग के बारे में, सो मैं जस्ट उसी को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड जस्ट ट्राइंग टू फाइंड इट आउट. एक बार वो हो जाए उसके बाद फिर मैं देखता हूँ. एक तो मुझे ना हाँ, ये रही. इसको देखता रहूँगा थोड़ा सा. ठीक है. ठीक है, एक काम करता हूँ. क्लाउड के पास जाते हैं और इसको बोलता हूँ. ओके, H1 हो गया. बाय ब्रदर, बाय बाय स्मृति क्रिएटर. आपका यार नाम ड्रॉप कर दे तो ज़्यादा सही रहता. बाय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. आई होप आई विल कनेक्ट विथ यू टुमारो. तब तक मैं मुझे एक इश्यू मिला है. एक बार मैं इसको थोड़ा सा रिपोर्ट कर दूं, देन आई एम गोना शेयर विद यू एज वेल. ठीक है. इसके अलावा एक बग मिला है, उसको थोड़ा सा अच्छा मैं बोल चुका हूँ. 2 मिनट दो गाइस, लेट मी डू इट. और एक बार हो जाए तो फिर मैं बताता हूँ. बट टाइप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर. ठीक है.
के इसका आएगा नेटवर्क अटैक कॉम्प्लेक्सिटी लो, प्रिविलेज रिक्वायर्ड नन, यूजर इंटरेक्शन नन, स्कोप ऑफ इसका अनचेंज्ड है, कॉन्फिडेंशियलिटी तो लो ही रहेगी, इंटीग्रिटी नन नन, 5.3। ठीक है, तब तक इसने भी कर दिया होगा। अमित, थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट ब्रो, गुड नाइट, सी यू टुमारो, टड़ा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमने ऐड कर दिया, स्टेप टू रिप्रोड्यूस कर दिए। काम करते हैं, सबको एक बार दोबारा से चेक करते हैं। ठीक है, अब हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना। पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट। Guys, just give me 2 to 4 minutes maximum. I'm gonna answer each and everything. कुछ मिला? हाँ भाई, ओम काफ़ी ज़्यादा इजी, मतलब लेट हो गए, सॉरी। एंड एग्जिट सिनेमेटिक वर्ल्ड, एंड क्या बोल रहे हो भाई? आई couldn't get your point. By the way, thank you so much for joining. ठीक है, इम्पैक्ट ये है कि ये बेसिकली थोड़ा सा लो हैंगिंग वाला मुझे वनबिलिटी वगैरह मिली है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एंड लेट्स सी अगर कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। Meanwhile, just give me 2 to 5 minutes and वैसे भी- मतलब ये वैसा है, मे भी एक्सेप्ट हो या मे भी वो छोड़ दें। इम्पैक्ट इसका कुछ ऐसा खास है नहीं, बस इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर है। टेस्ट स्क्रीनशॉट कर, आउटपुट शोइंग रिसोर्स पाथ नॉट फाउंड, जो कि हमें दिख रहा है ना। लेट मी चेक। ठीक है,
उसके अलावा आईपी भी हमें ऐड करना पड़ेगी यहाँ पे, जो कि सही है ना। यस, ठीक है। डिटेल्स वगैरह हमने सारी की सारी कर दी हैं। इसमें ऐड देखते हैं। इन्फॉर्मेशन, हाँ इन्फॉर्मेशन ब्रो, संडे को दिन में भी आओगे या रात में ही आओगे? बताओ यार, क्या कहना है आप सभी का। बात, ठीक है, आप बताओ, जैसा आप लोगों सबका कहना हो। इवन कल भी सैटरडे है, कल भी हम दिन में आ सकते हैं अगर आप सब लोगों का यह मानना है तो। ठीक है, तीसरी रिपोर्ट सबमिट करने जा रहा हूँ गाइस। एक बार मैं आपको ये सबमिट हो जाए, देन आई एम गोना एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट गिव मी 2 मिनट मोर। डिटेल्स वगैरह मैंने भर दी है। बेसिकली इसमें हमें इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर वगैरह मिला है JBL की वेबसाइट पे, जो कि हरमन के द्वारा ऑन होती है। ठीक है, हमने डिटेल्स वगैरह सारी की सारी इसमें भर दी है। काली का यूज़ किया है हमने, कल का यूज़ किया है। एप्लीकेशन हमें जो मिली है, बेसिकली इसमें सेल्सफोर्स का यूज़ हो रहा है, उसका कुछ डेटा वगैरह एक्सपोज हो रहा है। सी कुछ पता नहीं है हमें। गेट माई आईपी मैंने डाल दी है। मीडियम सिवियरिटी की ये है, एज पर द CSS वेक्टर जो भी हमें यहाँ पे मिला है उसके हिसाब से ये मीडियम में आ रही है। अब अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो हमारी इस सीरीज़ की पहली बग बाउंटी होगी, जहाँ से हमें जो भी बग अर्निंग वगैरह होती है, में भी इनका बेसिकली रिवॉर्ड $100 से लेके 4000 तक है, कुछ भी हो सकता है। सो आई वुड एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 500 एटलीस्ट, अगर एक्सेप्ट होती है तो। चांसेस काफ़ी कम है, आई बी ऑनेस्ट। ठीक है, अब हम जो करने वाले थे इससे पूछ लेते हैं। इसने बोला था सब कुछ कर दो, दिस सबमिशन इज इट वैलिड। ठीक है, हमने कर दिया। जो डिटेल्स वगैरह इसने बोली थी हमने ऐड कर दी है। ठीक है, डन। चलो गाइस, आपको दिखाता हूँ और देन आई एम गोना सबमिट इट। हाँ गाइस, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को, है ना? मिल जाता हूँ बिल्कुल। 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ नहीं भाई, ये USD की बात हो रही है। जो भी हमें अर्निंग मिलेगी इसमें USD में मिलेगी। सो इसकी अगर रिवॉर्ड पॉइंट की बात की जाए, देखो ये रिवॉर्ड $100 से लेके 4000 तक है। आवाज़ तो आ रही है ना आप लोगों को क्लियरली? ठीक है, सो कितने लोग देख रहे हैं? 19 लोग देख रहे हैं। तो इसको मैं एक बार से जल्दी से सबमिट कर देता हूँ आप सभी के साथ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैंने डिटेल्स वगैरह सारी की सारी इसमें भर दी हैं। ये देखो इसका वो है वेक्टर, मीडियम 5.3 और सबमिट। रिपोर्ट सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, तो हमारी ये रिपोर्ट हो चुकी है सबमिट सक्सेसफुली। अब हम आगे जो भी इसका काम वगैरह है थोड़ा एक्सप्लेन करना। हाँ जरूर करता हूँ, बस मुझे 2 मिनट दो, मैं एक बार वेरीफाई कर लूँ प्लीज़। सॉरी, मैं काफ़ी टाइम से आपको रोक रखा है। कमर दर्द हो रही है आज तो, 3-4 घंटे हो गए बैठे बैठे, बिल्कुल बैठा था।
क्योंकि डेव इन्वायरमेंट में मिला है तो मे बी दे आर गोना रिजेक्ट इट, और इसमें कोई एक्चुअल डेटा भी हमने एक्सेस नहीं किया है। काफ़ी ज़्यादा ये थ्योरेटिकल है, तो इसलिए मैं ना थोड़ा सा ओके ओके हूँ, शायद ये होगा। क्लोड का भी कहना है इट्स अ 50-50 कि ऑन अ मेच्योर प्रोग्राम दिस माइट be accepted as a low to medium. On a strict program, you might get informational or NA. The report quality is great though. Even if this one doesn't pay you, it shows you are thinking correctly about the access control gaps. और इसने कुछ टिप्स वगैरह भी दी हैं हमें, जो कि हम यहाँ पे अपने क्लाउड कोड को पास करने वाले हैं। अरे हमने सबमिट कर दिया, उसके बाद बोल रहा है कि ये भी हो रहा है। अब तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, क्या हम इसको एडिट कर सकते हैं? आज किसी को आइडिया है क्या हम इसको एडिट कर सकते हैं? हमने यहाँ पर भी हम ऐड कर सकते हैं। काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं गाइस।
ठीक है, क्या हम इसमें कमेंट ऐड कर सकते हैं? यस, एडिशनल फाइंडिंग्स। एडिशनल फाइंडिंग डेटा एक्सपो एपीआई एक्सपोजेस, इसका भी स्क्रीनशॉट ऐड कर देते हैं। अरे यार, ओके। हाँ जी, तो कौन कौन देख रहा है लाइव स्ट्रीम पे? आ जाओ, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हेलो गाइस, पे देख रहा है लाइव या अकेला ही बैठा हूँ? तेरह लोग वैसे वॉचिंग है, 13 लोगों की, बट डोंट नो। आजा, मैं थोड़ा बग का एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में थोड़ा सा 2 मिनट में टीम में खेलेगा। क्या कहना चाहते हो भाई? टीम में खेलेगा मतलब? एक काम करो, जस्ट गिव मी 5 मिनट एंड मैं 5 मिनट में आता हूँ गाइस। थोड़ा सा वॉशरूम होके आता हूँ। विल बी बैक इन 5 मिनट, यहीं रहना आप, आके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक यू। सॉरी गाइस।
हाय गाइस, हम एक 5 मिनट खत्म होने से पहले ही आ गया। अरे भाई, काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, ये तो काफ़ी अच्छी बात है वैसे। आई होप आवाज़ आ रही होगी आपको। लेट मी चेक माई सेल्फ एज वेल। आई होप आवाज़ आ रही होगी आपको। नहीं भाई, 10 मिनट से वेट कर रहा था, उसमें लग जाता है टाइम यार। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट इट। एंड कुछ मिला? यस, हाँ भाई, एक बग मिला है जो हमने किया है संडे को भी। अरे बताओ आप लोगों का क्या कहना है। मैं तो कल भी सैटरडे को भी दिन में लाइव आ सकता हूँ, नो वरीज। मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करना बग। हाँ मैं करता हूँ अभी। टीम में खेलोगे? खेलेगा? ओके ठीक है भाई। ओम कर कर करे। थैंक यू भाई, जो भी लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है उन सबका स्वागत है इनक्रिप्टिकल की इस लाइव बग बाउंटी हंटिंग सीरीज में। सॉरी, आप अब में से अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना। लाइक नहीं किया है तो वो भी कर देना। हमारा आज का टारगेट है, टारगेट वैसे लाइक वाला कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा सब्सक्राइबर वाला जरूर आज 850 क्या हो सकता है, लेट्स सी। अगर नहीं किया तो कर देना प्लीज़। वॉचिंग यू ब्रो। अच्छा, आई गॉट $1000 बाउंटी अभी को। सही है भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन्स भाई, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। आई मैच्योर ब्रो। थैंक यू बाय द वे, थैंक यू सो अगेन फॉर ज्वाइनिंग। Some kind of community of hackers. Anyone team up for hunting bug? Yeah, sure, we can do that, bro. I'm in. I'm always in. I'm always ready to collaborate with you guys. I'm in JAGDEEP. नहीं ब्रो, मैं ऐसे ही बोल रहा था, मेरे को कुछ नहीं आता। आता भी नहीं, जस्ट आई नॉट टू नो दैट बग लॉग ढूंढते हैं अभी सब सिंगल दिखे तो। भाई आप भी करो मेहनत, सीख जाओगे। अगर नहीं, कहीं पे भी कोई डाउट है तो चेक इनक्रिप्टिकल्स यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आपको सारे से जो भी चीज़ें चाहिए आपको, सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए मैंने, ट्रस्ट में। मैंने वो सारी की सारी चीज़ें उस पॉइंट पीओवी से एक्सप्लेन की हैं जो मुझे लगता था कि कोई मुझे एक्सप्लेन करे। सो आई होप आपको वो अच्छा लगेगा। प्लीज़ चेकआउट करना, और आपका जो भी व्यू वगैरह हो उस पर आपका कैसे क्या था, प्लीज़ गाइड फीडबैक जरूर देना। कोई मिस्टर रोबोट रोबोट देख के कम्युनिटी वाली बात दिल पे मत लेना। इधर मेरे ही तो कोई नहीं हैकर ग्रुप से, क्योंकि जाट मुझे कुछ नहीं आता। ओके, हम अवॉइड करेंगे ऐसी लैंग्वेज को भाई। ओमकार, ओमकार आई थिंक, यस। तो ऐसे कर मेरी जोक्स पे। हाँ भाई, मैं हंसा, अच्छा लगा, अच्छा था वैसे। नहीं भाई, 10 मिनट से वेट कर रहा हूँ। है हाय। हाँ सिफत एक मिला है। बाय द वे तुम बताओ अपने उसके बारे में बता रहे थे, कुछ मिला उसको, कैसे मैंने अपडेट किया? बाय द वे हमें एक मिला है जेबीएल पे, रिपोर्ट सबमिट कर दी है, बट यार वो ना थोड़ा ओकेस ओकेस वाला है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं हमें कुछ उसमें से मिलेगा, एक्सेप्ट होगा नहीं होगा, बहुत सारे पीओवी हैं उसके। बाय द वे हमारे इनक्रिप्टिकल के डिस्कॉर्ड पे भी काफ़ी लोग अब जुड़ते जा रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैं एक नया चैनल बना दूंगा जहाँ पे आप लोग अपने रिसोर्सेस वगैरह शेयर कर सकते हैं। अब इसकी तो सेटिंग वगैरह मुझे देखना पड़ेगी, क्योंकि सारे ओपन हैं, कौन कौन से नहीं है क्या नहीं, आई डोंट नो। किसी दिन बाय द वे मैं सोच रहा हूँ कि हम केवल और केवल इस पे भी लेते हैं, लाइव जाने की जगह ना, लाइव भी जाएंगे शायद, बट हम डिस्कॉर्ड के सर्वर के थ्रू कॉल पे ज्वाइन करेंगे, और आप लोगों को एक एक करके मौका मिलेगा अपने 1-to-1 वाला डिस्कशन वाला सीन करने का। तो मे भी हम इस संडे का वो कर लें दिन में, क्या बोलते हो आप लोग? 1 घंटे का सेशन रहेगा, टाइमिंग वी कैन डिस्कस, बट उसमें बस यही रहेगा कि ओनली डिस्कॉर्ड पे जो लोग होंगे उन्हीं को हम, दे विल ओनली एबल टू आस्क और डिस्कस एनीथिंग। अब इसका भी वेट करते हैं।
रिपोर्ट हमने आज तक बेसिकली देखा जाए तो 3 रिपोर्ट सक्सेसफुली हमने सबमिट करती है। इसका जैसे ही रिप्लाई वगैरह कुछ आता है, आई एम गोना डेफिनेटली गोना शेयर विद यू गाइस डायरेक्टली। ऑल्दो ऐसा कुछ मेजर है नहीं, बट लेट्स सी यार, अंडर रिव्यू ही है अभी तो। और ये एसवी हैक पे हमारी पहली एप्लीकेशन है जो हमने सबमिट की है। इससे पहले हमने कुछ किया नहीं अभी तक एसवी हैक पे। स्कोप वगैरह तो हमने देख ही लिया था, हमारा है सच में मीडियम है ना, तो मे भी देखो क्या आता है। या अगर हाई में एक्सेप्ट करते हैं तो $500 है। मतलब हाई में करते हैं तो मिनिमम 500 से लेके $2000 तक है, और अगर लो में भी करते हैं, जो मुझे लगता है एटलीस्ट लो में तो इनको एक्सेप्ट करना चाहिए 200 से $500। और अगर वो करते हैं मे भी $500 भी इंडिया के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऑल द डिडक्शन वगैरह बहुत होते हैं, 47,000 के आसपास से। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। वाई वाई के 2003 क्या बोल रहे हो भाई? आई डेंट गेट योर पॉइंट। सेकॉप्स i3j, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल। जो भी अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, वेलकम वेलकम टू इनक्रिप्टिकल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि हम 1 के सब्सक्रिप्शन पे एक गिव अवे करने वाले हैं। जो भी मैं अभी बग बाउंटी के लिए जो एआई टूल यूज़ कर रहा हूँ, आई एम गोना शेयर विद यू फ्री ऑफ कॉस्ट, बट ओनली व्हेन वी रीच 1000 सब्सक्राइबर। अब आते हैं आपके सवाल पे। आपका सवाल है लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन, रैम वगैरह क्या होना चाहिए। भाई बजट पे डिपेंड करता है, बट मिनिमम ट्राई करना बस। और हाँ, बग लैपटॉप की बात की जाए तो एटलीस्ट ट्राई करना कि जीपीयू उसका हो, जीपीयू अच्छा होना चाहिए, 4 से 6 GB। और उसके बाद रैम 16 GB हो। एसएसडी चलेगा, एसएसडी 500 GB चलेगा बहुत है, बट ये करने के लिए पता नहीं। ठीक है। ओमकार भाई, आई थिंक मैं आपका नाम सही पढ़ रहा हूँ, ओमकार। अगर ओम है तो बता देना, अदरवाइज ओमकार हम बता दें। भाई तू है लाइव हैक करेगा तो तेरी मेहनत चुरा नहीं लेगा, लाइक तू वक्त ढूंढ ले। हाँ यार, इसका मैं सोच रहा हूँ क्या कर सकते हैं, आई डोंट नो। अगर तू चुरा भी लेगा तो क्या ही ले जाएगा यार, मेहनत। हाँ, देखते हैं क्या कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन बोलने तक और कोई बात तो सही है। भाई अगर बग बाउंड्री मिलती है तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है बाउंड्री रिसीव करने के लिए? रिपोर्ट को सबमिट करो, जब किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर आप हैकरवन के थ्रू कर रहे हो, बुकक्राउड के थ्रू कर रहे हो, एसवी के थ्रू कर रहे हो, तो उन पे सबमिट करो। उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग बाउंड्री रिलीज करने के वो होते हैं, तो उसके हिसाब से आप जा सकते हो, जो भी उनका बेस्ट लगे उनको। पानी लेके आना था यार, अभी लाता हूँ कोई नहीं। भाई आप रिपोर्ट कैसे बनाते हो प्लीज़ बताइएगा जरूर। रिपोर्ट राइटिंग के लिए मैं ना क्या कर सकता हूँ, कोई वीडियो है? आई थिंक मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है इस पे। आई थिंक मैंने ऑलरेडी भी वीडियो बनाई हुई है रिपोर्ट के लिए। ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना भाई, लिंक दे रहा हूँ मैं आपको। इसमें मैंने डिस्कस किया है रिपोर्ट वाला पार्ट, चेक कर लेना इसको। सेटऑप्स सिर्फ भाई मैंने रिपोर्ट किया है, वो CSRF टोकन लीक है जेएस बंडल में। देखा जे जावास्क्रिप्ट की फाइल्स वगैरह में, जैसे आपको पहले ही बता रहा था कि गो थ्रू किया करो भाई डिटेल में, बहुत सारी चीज़ें लीक मिलती हैं, बहुत कुछ मिलता है। तो यही हुआ है भाई के साथ में। CSRF टोकन से किसी भी अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। रिपोर्टेड सेवेटी तो भाई इसकी क्या आई है, हाई आई है, क्रिटिकल आई है? ड्रॉप करना नंबर क्या आया था CBSS स्कोर इसका वेक्टर के हिसाब से। 4 GB रैम, नो SSD, कैन यूज एज फॉर बग हंटिंग। I'll be honest, नहीं, बट स्टार्ट कर सकते हो। यस,
सो आप स्टार्ट कर सकते हो जैसे जैसे टाइम पैसा वगैरह अर्निंग वगैरह शुरू हो जाए। इसको इम्प्रूव करने पे सबसे पहले पहली प्रायोरिटी रखना, क्योंकि भी मेरा सिस्टम फ्रीज कर जाता है भाई। मेरा सिस्टम कह देता है मालिक क्या कर रहे हो। बाकी आप बताओ। Bro, you can have someone in background like he will make report at the same time and he can submit it to तू बोले तो सुसु का ब्रेक बोल के जाने का, फिर बग रिपोर्ट बनाने तक कर देने का, एंड देन यू कैन एक्सप्लेन। यार अभी कोई है नहीं जो ऐसे साथ में बैठ के काम कर सके यार। यही दिक्कत होती है जब आप किसी भी चीज़ में नया नया स्टार्ट करते हो ना, तो नहीं होता है कोई। बट लेट्स सी इन फ्यूचर वी कैन वर्क ऑन दैट एज वेल। आइडिया अच्छा है वैसे, आइडिया अच्छा है, आइडिया काफ़ी अच्छा है। सच्ची वारदात कराए भाई। अब कब से कर रहे हो गया यार। ये अकेला पर्टिकुलर बग बाउंटी या साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 2 साल के आसपास हो गए। वैसे मैं आईटी सेक्टर में हूँ लास्ट 4 साढ़े 4 साल से। इनिशियली स्टार्ट किया था, इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था। 1 सेकंड प्लीज। अब अपनी जर्नी बताइए प्लीज़। जर्नी मैंने सोचा है अभी, मुझे पहले भी काफ़ी लोगों के क्वेरी वगैरह आ रही थी। जर्नी अभी ऐसे कुछ है नहीं यार, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुई है। लेट मी रीच समवेयर, फिर देन अगेन अब आई एम गोना शेयर विद यू गाइस। अभी तो यही है कि 1K सब्सक्राइबर हो जाए, आई एम गोना डू अ गिव अवे, जिसमें मैंने ये जो भी टूल आप देख रहे हो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका गिव अवे करने वाला हूँ आपके साथ। तो लेट्स सी कब हम 1K सब्सक्राइबर तक पहुँचते हैं। आई एम इमीडिएटली गोना ड्रॉप दिस टूल। और बाय द वे हम केवल 11 सब्सक्राइबर दूर हैं आज की जो भी हमारा गोल था। कैन वी डू इट? सर जी मेरे पास i7 13 जनरेशन है और 1 TB SSD पर ग्राफिक कार्ड नहीं है, काम हो जाएगा इस पीसी पर? भाई काम शिवम, जैसे आपने आप तो पहले दिन से ही जुड़े हुए हो, सो जैसे आपने देखा था कल और परसों मेरा लाइव पे कैसे सिस्टम ने बिल्कुल हग ही दिया था। तो उसका पीछे का रीज़न ये है कि मेरे सिस्टम की स्पेक्स अगर तुम सुनोगे तो बहुत 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 अच्छी हैं, बट केवल जीपीयू नहीं है इसमें। सो बेसिकली मैंने जब ये सिस्टम बनाया था मैंने भी यही सोच के बनाया था कि दैट आई एम गोना स्टार्ट विद currently what I do have। उसके बाद जैसे जैसे बजट वगैरह आएगा तो मैं करूँगा। तो बेसिकली अभी तक मेरे सिस्टम की अगर बात की जाए तो सुनना, i9 है 19th जनरेशन, मतलब लेटेस्ट वाला उसमें है सीपीयू, प्लस 64 GB रैम है, ठीक है, प्लस 1 TB उसमें हार्ड डिस्क है, और जो क्या कहते हैं इसकी पावर सप्लाई वगैरह जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, 900 वोल्ट के आसपास है। बट इसमें केवल और केवल अभी जो मिसिंग है वो पार्ट है जीपीयू का, जो अभी मैंने नहीं लिया था तब बजट की वजह से। क्योंकि तब जो मैंने लिया था तब मुझे तभी उसी टाइम पे इट्स बीन अ मोर देन अ ईयर, तब मुझे पड़ा था कुछ 120 125 के आसपास। आज की डेट में तो ये आई थिंक 2 के आसपास 180 के आसपास पड़ेगा कम से कम, जितने रैम के वो बढ़ चुके हैं। इवन रैम के प्राइसेस आज की डेट में इतने कि अगर मैं एक रैम भी बेच दूँ ना 32 GB की, उसे उस वाली प्राइस से मुझे जीपीयू आ जाएगा अच्छा वाला।
तो सिस्टम अच्छा है। तो वेरी ऑनेस्ट ये है कि CPU आप मतलब स्टार्ट कर सकते हो, बट बिना GPU के तुम्हारा सिस्टम नहीं चलेगा। अभी जैसे हम भी इतना बहुत ज़्यादा हाई एंड काम नहीं कर रहे हैं, अगर मुझे कोई हैश वगैरह मिल जाती है तो वो मैं कर ही नहीं सकता। हैश क्रैक हो ही नहीं पाएगी, इसमें सिस्टम हक देगा, क्योंकि ये GPU इंटेंसिव काम है। और जितने भी टूल्स वगैरह अभी इवन ये भी रन हो रहे हैं, सारे के सारे GPU वाले हैं। बट सिंस CPU है नहीं, CPU है अकेला, और CPU में ऑल्दो आता है इंटीग्रेटेड वाला ग्राफिक कार्ड, वो तो बहुत हल्का रहता है, तो उसके साथ चल रहा है बस। लेट्स सी। तो नहीं मतलब स्टार्ट कर सकते हो आप, आपका प्रोसेस, आपका भी i7 है, अच्छा है सब कुछ। SSD तो 500 GB से ऊपर हो बहुत है। SSD का कुछ काम होता नहीं है इसमें, स्टोरेज वाला काम है नहीं हमारे, एटलीस्ट बग बाउंटी वगैरह पार्ट में। बग बाउंटी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, आई लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ। और हार्म 69 अड्डा, थैंक यू। पहली बात, अभी हमारे व्यूअर्स बढ़े हैं थोड़ा सा, तो थैंक यू सो मच जो जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बग बाउंटी क्या है? बग बाउंटी बेसिकली एक ऐसी बेसिकली बग बाउंटी में होता है क्या है कि आप कोई भी एप्लीकेशन मान लो, जैसे मेरी इनक्रिप्टिकल की वेबसाइट ले लो, encrypticle.com। तो बेसिकली encrypticle.com की कंपनी या जो भी ओनर वगैरह है वो आपको ये बोलता है कि दिस इज़ आवर कंपनीज वेबसाइट, और ये हमारे टोटल सॉफ्टवेयर, ये अपनी हमारी IPs डोमेन वगैरह है, आप इस पर टेस्ट कीजिए। इसमें जो भी कमियां, जो भी वनबिलिटीज़, जो भी इश्यूज वगैरह मिलते हैं, ऐसी वनबिलिटीज़ जिसको कोई भी अटैकर या कोई भी अटैकर जिसको यूज़ करके हमारी कंपनी का मिसयूज़ वगैरह कर सकता है, एक्सप्लॉइट वगैरह कर सकता है, आप वो कमियां ढूंढिए, हमें बताइए, और हम आप जो कमियां बताते हो हम आपको उसके बदले में पे करेंगे। और वन सेकंड का पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, हम उस कमियां वगैरह को फिक्स वगैरह करेंगे, वनबिलिटीज़ वगैरह को, और उसके रिस्पॉन्स में हम आपको पैसा देंगे। ये होती है बग बाउंटी। अब इसके कुछ काफ़ी सारे रूल्स वगैरह होते हैं, वो हमें देखना होता है, बट बेसिक बात की जाए तो यही है। सच्ची वारदात क्राइम भाई कर दिया सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। सिफत भाई, लीक्ड CSRF टोकन यूज करके किसी भी यूजर का अकाउंट लीड कर पा रहे हैं, ये CSRF टू अकाउंट रिलेशन शायद वैलिड हो जाए। ऑब्वियसली होगा ना भाई, होगा ही। अगर तुम किसी का अकाउंट रीड कर पा रहे हो तो भाई वो क्रिटिकल में ही जाएगा। अब बाय द वे बताना, ये तुमने इसकी सिवियरिटी क्या मैंने पूछी थी, आपने बताया नहीं सिवियरिटी क्या है इसकी। आई थिंक इसकी एटलीस्ट मीडियम, सॉरी नॉट मीडियम, हाई या क्रिटिकल आना चाहिए थी। आप ई लर्निंग के लिए कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर अपने बंटिंग वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट क्लियर? भाई मैंने स्टार्टिंग की थी तब मैंने TryHackMe को बहुत अच्छे से देखा था। TryHackMe पे मैं अभी भी ग्लोबली, अभी 1 महीने से एक्टिव नहीं हूँ तो थोड़ी सी रैंक नीचे गिर गई है, अदरवाइज पहले मैं टॉप 3% ग्लोबली था, अभी 4% आ गया, क्योंकि मैंने 1.5-2 महीने से किया नहीं है। उसके अलावा सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं कुछ मेरे पास, जैसे CH हो गया, सर्टिफाइड एथिकल हैकर, सर्टिफाइड रेटिंग प्रोफेशनल, CRTP, PWPA फ्रॉम द TCM सिक्योरिटी, और भी 2-3 है छोटे छोटे, तो ऐसे 4-5 हैं। बाकी कंटिन्यू आप देखते रहो, जो भी CV वगैरह रोज आती है उसको देखते रहो। जितने भी प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, जैसे HackerOne हो गया, इनकी जो भी नई नई रिपोर्ट वगैरह आती हैं, जो डिस्क्लोज होती है, उनको देखो एक अटैकर ने क्या टारगेट लेके कैसे काम किया, कैसे ये सारी सारी चीज़ें हुई, तो इसको डिटेल में जाके आप देखो। FYC सार्थक, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Bro, which degree would you recommend me to land a job in security engineering, BCom in hardware networking or BCA along with certificate? देखो ऐसा है कि अगर तुम्हें कोई भी डिग्री होगी तो तुम्हारे साइबर सिक्योरिटी में ऐसा कुछ है नहीं कि तुम्हें रोक मिलेगी या कुछ होगी। बट अगर तुम BCom कर लेते हो, स्पेसिफिकली अगर तुम साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी में BTech कर लेते हो, तो कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंपनीज वगैरह होती हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक रोल्स वगैरह होते हैं जो केवल रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि BTech की हो जिसने, तो उस वाले POV से अगर देखो तो तुम कर लोगे। BTech तो ज़्यादा बेस्ट है, अदरवाइज तुम BCom करो, BCA करो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम सर्टिफिकेट अच्छे लो। सर्टिफिकेट की भी अगर बात करें तो वेल रिसर्च करके लेना, ऐसे आंखें बंद करके मत ले लेना। आज की डेट में, आज मैं तो आप सबके सामने खुलासा करने जा रहा हूँ, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, CH आज की डेट में बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। केवल और केवल HR हैं जिनके माइंड पे ये चढ़ा हुआ है कि उनको CH चाहिए, CH वाला बंदा चाहिए, अदरवाइज CH की बिल्कुल वैल्यू नहीं है, बहुत आउटडेटेड है, बहुत उससे बहुत अच्छे सर्टिफिकेट आ चुके हैं भाई आज की डेट में। PWPA मुझे अच्छा लगता है, थ्योरेटिकल ज़्यादा उसमें नॉलेज अच्छी है। EWPT कर लो तुम, बहुत अच्छा है वो। तो ऐसे थोड़ा वेल रिसर्च करके ये करो, बाकी डिग्री तुम कोई भी करो चलेगा, बट अगर BTech कर लेते हो आप तो बहुत ही बेस्ट है वो। सच्ची वारदात भाई, मुझे साइबर सिक्योरिटी के में इंटरेस्ट है, मेरे स्पेसिफिकेशन भी है लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ, थोड़ा हेल्प करो भाई। स्टार्ट के लिए मैंने वीडियो दी थी ना,
रोड मैप नाम की एक वीडियो मिलेगी आपको मेरे चैनल पे, उसको जाके देखो पूरा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है आई थिंक काफ़ी अच्छे से। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट आता है, ये वाली रोड मैप नाम की वीडियो है, एथिकल हैकर कैसे बने समथिंग समथिंग, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे भी दे देता हूँ, इसको पूरा गो थ्रू करो। कोई भी डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ लेना, बट उससे पहले वीडियो देखो सारी की सारी। इसमें कोई भी डाउट होता है नोट डाउन करना, मैं ईच एंड एवरी जो भी डाउट वगैरह है मैं आपका क्लियर करूँगा, ठीक है। तो इससे स्टार्ट करो, अच्छी है ये वीडियो, आपको सब कुछ बता देगा। तुषार रावत, हाय तुषार, वेलकम वेलकम टू इनक्रिप्टिकल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हाय ब्रो, मैं मन स्टेक डेवलपर हूँ, कुछ एडवाइस दे सकते हो कि आगे क्या करना चाहिए, कि मन स्टेक फ्यूचर के लिए सही है या नहीं है, कि और करना। भाई अच्छा है, मैंने भी मन स्टेक में काम किया है। जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू गाइस कि मैंने पहले 2.5 साल के आसपास लगभग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्विच किया है। स्विच इसलिए किया है, ऐसा नहीं था कि उसमें कुछ दिक्कत थी कुछ नहीं, बट मेरा इंटरेस्ट था, कॉलेज दिनों से ही मेरा इंटरेस्ट था साइबर सिक्योरिटी में आने का। बट तब मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डेवलपमेंट फर्स्ट। तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करके वहाँ जाते हो तो वो वेल एंड गुड है, ग्रेट है, बढ़िया है भाई। मन में अच्छे से करो, बट मन पे अकेला रोकना मत, खुद को इम्प्रूव करते रहो। मन स्टेक के अलावा बैकएंड में फोकस करना ज़्यादातर, फ्रंट एंड तो ठीक है, बट बाकी डिपेंड करता है आपका क्या मेन फोकस एरिया है। 403 पेज को कैसे बाईपास करें, तो 403 को बाईपास करने के काफ़ी सारे ऑप्शन हैं भाई। 403 को बाईपास करने के लिए यार देखो, तुम्हें हेडर्स वगैरह को आप प्ले कर सकते हो, हेडर्स वगैरह में तुम एक्स फॉरवर्डेड वाले ये रूल्स वगैरह ऐड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास बर्प है तो बर्प में एक 403 बाईपासर नाम का एक एक्सटेंशन आता है, आप उसको ऐड कर सकते हो, तो बढ़िया करता है भाई ये काम। एक मिनट रुकना, मैं पानी लेके आता हूँ, इस प्यास लग रही, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस सर्टिफिकेशन करनी चाहिए बिगिनर को, नहीं भाई छोड़ दो, कोई नहीं पूछ रहा आज की डेट में। उससे बढ़िया तुम ईजेपीटी से स्टार्ट करो, ईडब्ल्यूपीटी उसका, ईडब्ल्यूपीटी का। लेट मी शो यू वन, एक मिनट रुको, मोबाइल चार्ज लगा लूँ, 1 मिनट प्लीज। देखो ये रहा तुम्हारा ईडब्ल्यूपीटी, ईजेपीटी। बढ़िया सर्टिफिकेट है, कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस वगैरह इन सब के अलावा इससे स्टार्ट करो। अच्छा जा सर्टिफिकेशन वगैरह ये सारी मतलब बढ़िया है ये। आई थिंक इसकी कॉस्ट कितनी है, वो सारी की सारी चीज़ें कवर करता है इनिशियली, जो तुम्हें बेसिक वगैरह आनी चाहिए स्टार्टिंग में। होस्ट वगैरह हो गया, नेटवर्किंग हो गया, उसके बाद आप मेथडोलॉजीज वगैरह क्या होती हैं, नेटवर्किंग ऑडिटिंग, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी भी इसमें है, सारी की सारी चाहिए, बढ़िया है ये चीज़। और कितने का है, अच्छा इसमें भी पता क्या है, याद रखना हमेशा, हाँ EJPT V2 याद रखना, इसमें हमेशा वो आते रहते हैं, ये फ्री वो चलाते रहते हैं कि भाई आज प्रमोशन वगैरह, प्रमोशन याद नहीं आ रहा था मुझे, प्रमोशंस वगैरह चलाते रहते हैं, तो ये 350 वगैरह का बिल्कुल मत लेना, ये तुम्हें बहुत सस्ता पड़ता है EJPT तो आ गया। और इसका ये बंडल लेना, कभी भी लो, सिंगल ऐसे मत ले लेना। EJPT कहाँ है यार, ये रहा, 399 का है ना, इसमें भी 50% तक का तुम्हें ऑफ मिलता ही रहता है, जो कि अगर आप चाहो, मैं भी अभी हमें होम पेज पे जाएँ, है कभी क्या देखता हूँ, रुको 1 मिनट रुकना, मैं चेक करता हूँ। अभी नहीं है, बट लेट मी चेक माई ईमेल, मुझे आया ही होगा, इनका ईमेल आता ही रहता है हर तीसरे चौथे दिन। जो कि आई थिंक प्रमोशंस में होगा, कहाँ
क्या नाम है इसका, आइए नहीं, ये देख रहे हो, आईने के प्रमोशंस के पड़े रहते हैं। ये देखो फ्लैशिट, इनकी ये सेल आती ही रहती है, 99% या 50% वाली सेल आती रहती है कभी भी। ये देखो, ये पता नहीं कितना पुराना है, 31 मार्च का है। अभी ये 2-4 दिन में फिर दोबारा आ जाएगा। डेवऑप्स कैसे लगता है आपको? डेवऑप्स बढ़िया है भाई, डेवऑप्स डेवऑप्स भी अच्छा है। डेवऑप्स में चले जाओ, डेव से कोक में चले जाओ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ई डब्ल्यू पी टी ई जे पी टी कहाँ गया, ई जे पी टी करता हूँ, चेक कर लो तो मुझे कितने का पड़ रहा है। अभी तो इन्होंने हटा दिया है, अदरवाइज ये 50% तक तुम्हें ऑफ मिल जाएगा बहुत ईजली, तो कभी भी इससे ज़्यादा मत लेना। अभी इनका रिसेंट कोई आया नहीं है, हर चौथे पाँचवें दिन ये निकालते रहते हैं। आई वुड 100% सजेस्ट, अगर मैं आज की डेट में बताऊँ ना, मुझे भी करना होता तो मैं यही करता। मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे हिसाब से बेस्ट है। ये देख रहे हो, हर दूसरे चौथे दिन ये आते रहता है इनका। ये देखो, लास्ट चांस, हर बार ये बोलते हैं लास्ट चांस। ये 28 फरवरी को आया था, मंथ एंड पे आता है इनका मोस्टली। ये देखो 28 को ही आता है हमेशा। हाँ भाई, ये मैंने अभी देखा, देखो 28 मार्च को आया था, उससे पहले ये 28 फरवरी को आया है। ठीक है, उससे पहले जनवरी में आया होगा। बहुत पड़े हुए हैं, हटाता नहीं है। ये देखो 26-27, तो 26-27 जनवरी अप्रैल या मार्च के पास इनके पास आते रहते हैं। इससे ज़्यादा मत खरीदना कभी भी। और अगर तुम डायरेक्टली अगर और अच्छा चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट ई डब्ल्यू पी टी में चले जाओ। वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा तुम्हें, बट वो और अच्छा है इससे, अगर तुम्हें वेब पेन टेस्टिंग साइड जाना है तो। ई डब्ल्यू पी टी में चले जाओ, ये बहुत अच्छा है। देखो ये सारी की सारी चीज़ें हैं इसमें, जो हमें जब बग हंटिंग के लिए जो बेसिक्स वगैरह सारी की सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सब तुम्हें मिलेगा। और अकेला कोर्स नहीं है ये, साथ में इनका कंटेंट वगैरह भी है जो काफ़ी अच्छा है। ये सारा का सारा उसी में देखो, रिकॉनेसेंस हो गया, इन्फो गैदरिंग हो गया, वनबिटी असेसमेंट हो गया, सिक्योरिटी टेस्टिंग हो गया, कॉमन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग वगैरह, सब कुछ उसी के लिए बहुत अच्छा है। ये 300 से ज़्यादा ऊपर नहीं पड़ेगा। अभी तो जाओगे तो तुम 500-600 ऐसा कुछ पड़ेगा, तो इसको इतने का मत लेना, वेट करो थोड़ा सा उसके बाद। अभी तो देखो 600 का पड़ रहा है, तो अभी मत लेना इसको। ठीक है, तो हमने आज हमारी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, और कहाँ है हमारा, इसको अपडेट कर देते हैं। चलते हैं हमारी काली पे, देखते हैं कुछ और मिला है क्या। अहमद वीडियोग्राफी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। बाय द वे गाइस, वी आर जस्ट 1 सब्सक्राइबर अवे फ्रॉम आवर टुडेज गोल। ओके भाई, वैसे कितने साल से आप काम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी में? मुझे हो गए मोर देन 2 इयर्स अकेले साइबर सिक्योरिटी में। उससे पहले और भी काफ़ी सारी चीज़ें की हैं मैंने। इसको और कुछ मिला है, लेट मी चेक इट एज वेल, और उसके बाद हम कोर्सेज की बात कर रहे हो भाई, या सर्टिफिकेशंस की बात कर रहे हो? कोर्सेज तो भाई मैंने सब TCM सिक्योरिटी का सब्सक्रिप्शन ले रखा था, ये मंथली, तो शायद ही कोई TCM सिक्योरिटी का कोई कोर्स हो जो मैंने छोड़ा हो। सारे कंप्लीट किए भाई, सारे के सारे। और अगर कोर्सेज और सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो देखो, CRTP, CH का प्रिंट निकलवाया नहीं मैंने अभी, और उसके अलावा PWPA, उसके अलावा SCP, और भी बहुत सारे, बस ये फ्रेम वगैरह अभी मंगवाए नहीं है मैंने।
अदरवाइज यहाँ पे लगाऊँ तो 5-6 लग जाएंगे। ब्रो अभी तक बग बाउंटी से कितना कमा लिया आपने अभी तक? भैया आज डे 4 है, इससे पहले वाला आज छोड़ देते हैं। आज डे 4 है, आज तक हमने 3 सबमिट कर दिए हैं रिपोर्ट सक्सेसफुली एक्ट। और उसके बाद हम देखते हैं, हमारा अभी का टारगेट है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो पुराना जो हो गया वो छोड़ दे। ब्रो मेरा इंटरेस्ट एक्टिव डायरेक्टरी में भी है। तुम्हें एक्टिव डायरेक्टरी पेन टेस्टिंग कैसा लगता है? बढ़िया भाई बढ़िया, रेड टीमिंग मज़ा आ जाता है। अभी तक मौका मिला नहीं है, आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट काम करने का, क्योंकि जिस कंपनी में वगैरह काम वगैरह करता हूँ वहाँ पे भी सारा का सारा मेरा वेब पीटी नेटवर्किंग इन सब में काम है। आई वुड लव टू वर्क इन ये वाले पार्ट में। CRTP इसीलिए किया था भाई मैंने, क्योंकि मुझे एक्टिव डायरेक्टरी रेड टीमिंग ये अच्छी लगती हैं चीज़ें। बट लेट्स सी कब तक मौका मिलता है हमें इन पे काम करने का, फिर देखते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी मैंडेटरी है वेब के लिए? यार वेब बेसिक के लिए देखो, तुम्हें एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए, तो उसके लिए आजकल ज़्यादा मिनिमम अगर बात की जाए तो तुम्हें जावास्क्रिप्ट अच्छे से आना चाहिए, एसक्यूएल तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, पाइथन भी जो गुड टू हैव है। और बाकी तुम स्टार्ट कर दोगे फिर धीरे धीरे सीख ही जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि पाइथन ही बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अदरवाइज स्टार्टिंग के लिए जावास्क्रिप्ट बहुत है। जावास्क्रिप्ट हो गया, एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल हो गया, एसक्यूएल। क्योंकि बैकएंड में अगर तुम्हें टेस्टिंग करना है तुम्हें पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि किसी घर का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है तो हम घर की टेस्टिंग नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम्हें ये सारी सारी चीज़ों का बहुत आइडिया अच्छे से होना चाहिए। दैट्स द रीज़न वाई आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, सो दैट आई करंटली मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, सो आई नो हाउ थिंकिंग। हैव यू अर्न एनीथिंग इन बग बाउंटी? यस ब्रो, आई हैव डन मल्टीपल सबमिशन इन बग बाउंटी, बट वी वॉन्ट बी टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि वो काफ़ी अलग सेगमेंट था और टाइम हो गया उस चीज़ को। अभी हमने दोबारा से स्टार्ट किया है, आज डे 4 है, डे 5 है सॉरी। और अभी तक हम 3 सबमिशन दे चुके हैं, जिनमें 2 एक्सेप्ट हो चुकी हैं, बट दोनों वो VDP काइंड ऑफ थी, मतलब VDP प्लस हमें कुछ उनका 1-2 महीने का जो एक्सेस वगैरह दिया है उन्होंने अपने सर्वर वगैरह का, बेसिकली होस्टिंग वगैरह के से रिलेटेड है, तो हम उसको भी एज अर्निंग ही मानेंगे। आज थर्ड वाली हमने सबमिट की है, जो एक्सेप्ट होती है चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि थोड़ा सा ना वो थ्योरेटिकल पार्ट है और वो थोड़ा सा ओके इस वाली कंडीशन में है कि डिपेंड करता है ये, मैं भी वो एक्सेप्ट कर ले, मैं भी वो रिजेक्ट कर दूँ। अगर एक्सेप्ट कर दें तो ऑब्वियसली हम वही चाहेंगे, बट अगर वो रिजेक्ट कर दें तो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो जो हमारी बाउंटी है जो भी हमने किया है वो डिपेंड करता है उन्हीं पर। मार्केट, हाँ भाई मार्केट में कंपटीशन हर फील्ड में रहा है, इसमें भी बहुत आ गया। कैरी मिनाटी फैन क्लब डिलीट करते हैं कुछ। क्या लगता है ये चैलेंज पूरा कब तक होगा? भाई इसमें लगेगा टाइम। बग बाउंटी आपको पता ही है रेंचो, सॉरी, बग बाउंटी ऐसी है कि टाइम लगेगा भाई इसमें। अहमद भाई से जब डिस्कशन हो रहा था वो भी यही बोल रहा था ना, देखा ना आपने, जो मैं डे 1 से बोलता है। बग बाउंटी ऐसा है कि मैं भी आपको एक दिन में 4 बग मिल जाए, मैं भी आधे घंटे में मिल जाए, मैं भी आपको हफ्तों तक कुछ नहीं। आप कहाँ से हो भाई? मैं बेसिकली ग्वालियर से हूँ भाई, ग्वालियर MP। क्या हम 850 पहुँच चुके हैं?
यस गाइस, वी हैव रीच्ड एट 50। थैंक यू सो मच जिनने आज सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। कैरी नाटी फंगिल, हाउ मच अर्न सो फार फ्रॉम। भाई ये मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले बताया, अभी नहीं बताने वाला, बस इतना समझ लो कि मेरा 2 कंपनी में हॉल ऑफ फेम में नाम है। पेप्सिको में है सबसे तो बड़ी जो कंपनी है जिनमें से, और दूसरा वो है, अब दूसरी कंपनी का नाम भूल जाता हूँ हमेशा मैं यार, डाइसन, सॉरी, डाइसन हॉल ऑफ फेम में और पेप्सिको में मेरा नाम है। उसके अलावा यस, मेरी कुछ 6 से 7 बाउंड्री रिलेटेड थी मुझे एक्सेप्ट हुई है। नंबर सब तुम जूम कर लो, 6 से 7 में क्या हो सकता है। कुछ इंडियन है, कुछ बाहर की है, तो अब आप तुक्का मार लो। बाकी और आप बताओ, आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे क्या है, कंटिन्यू करते हो रोज, कैसे क्या। और अगर आप में से किसी ने अगर इंस्टा वगैरह पे फॉलो वगैरह नहीं किया तो उनको 5 figure then USD? No. 4. Which platform would you recommend then doesn't scam? I personally like ESV hack. ESV hack एक अच्छा है यार, बट ESV hack में ना नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है, बाकी अड़ी बढ़िया है। ESV hack अच्छा है, इंटीग्रिटी अच्छा है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। बग क्राउड, फिर उसके बाद बग क्राउड, और अगर आप एक अच्छे लेवल पे चले जाओ देन यू कैन गो टू द हैकर वन। स्टार्टिंग में कहूँगा वहाँ से ना करो, दैट आई वुड सजेस्ट, क्योंकि वो थोड़ा सा मेच्योर प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे सारे के सारे एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है। बाकी आप बताओ, आप लोगों को क्या कहना है। तो ये सी एक पे जो हमने आज वर्क सबमिट वगैरह किया है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो ये हमारी इस वाली सीरीज़ की जो हमने, सॉरी, स्टार्ट वगैरह की है, अगर ये हो जाता है तो हमारी पहली ये होगी बाउंटी जो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट वगैरह, या जो हम स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं। लाइनेक्स में आपको लिमिटेशंस लगता है कुछ डेली यूज़ के लिए? नहीं, नहीं, बढ़िया भाई, मज़ा आता है लाइनेक्स में, जो मज़ा है वो कहीं और नहीं है। अभी तो ऐसा है कि यार मैं ये से रिकॉर्डिंग वगैरह करता हूँ, एडिटिंग वगैरह करता हूँ, तो उसके लिए मुझे ये विंडोज़ वगैरह सिस्टम रखना पड़ा। अदरवाइज जो मेरे पहले से जितने भी लैपटॉप वगैरह थे उनमें होस्ट होस्ट सीधा का सीधा होस्ट ओएस सीधा लाइनेक्स ही था। ऑल्दो कभी काली नहीं रहा ऑलवेज, बट कभी को जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर था तो कभी उबंटू था, कभी कोई था, पेरेट भी यूज़ किया है, उबंटू भी यूज़ किया है, काली तो अब करना ही है।
बाय द वे गाइस, बताओ संडे को हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं? दिन में सोच रहा हूँ संडे को हम कनेक्ट करते हैं किसी ऐसे टाइम पे जब लाइव के अलावा, तब बेसिकली। बट उस तब मैं सोच रहा हूँ हम लाइव जरूर जाएंगे, बट इनविटेशन रहेगा लिंक डिस्कॉर्ड के थ्रू। तो अगर आप में से किसी का कोई भी डाउट वगैरह हो, हम 1-to-1 डिस्कस करने वाले। अभी लाइनक्स से स्ट्रीम कर नहीं, अभी स्ट्रीम तो मैं होस्ट तो ओएस ही, होस्ट ओएस की बात की जाए तो विंडोज ही है, बट काली यूज़ कर रहे हैं इसे। बताओ 19 लोग देख रहे हैं, अगर क्या हमें करना चाहिए इसी संडे को दिन में? मैं भी 4 बजे के आसपास। यू आर यूजिंग ओपस 4.7? यस, ओपस एंड समटाइम्स हाइकू एज वेल। आपके अपने सिस्टम तो काफ़ी अच्छा है मेरा यार। ग्राफिक कार्ड नहीं है इसमें डेडिकेटेड कोई भी, बट बाकी सिस्टम अच्छा है। वर्चुअल मशीन यस, वी एम वेयर में काली। स्पेक्स की बात की जाए तो i9 है 14th जनरेशन, तो प्रोसेसर सबसे तगड़ा है। उसके अलावा रैम की बात की जाए तो रैम है 64 GB। तो रैम की साइड से तो मैं करोड़पति हूँ। साथ में हार्ड SSD है 2 TB, 1 TB इंटरनल और 1 TB एक्सटर्नल रखी हुई है मैंने। और बाकी चीज़ें भी सही है सब कुछ, बट जीपीयू नहीं है। जीपीयू तब लिया नहीं था, मैंने सोचा था कि बाद में लूँगा, और वो बाद में अभी तक आया नहीं है। बट अभी सफ़र कर रहा हूँ क्योंकि इवन डे 3 में भी हमें अचानक चलते चलते इतनी ज़्यादा लैग हो गई थी स्ट्रीम की, कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो मुझे सारा का सारे सिस्टम्स वगैरह बंद करके करना पड़ा, तब थोड़ा सा आया जीपीयू नीचे। क्योंकि जीपीयू है ही नहीं, सीपीयू का इंटीग्रेटेड जो जीपीयू है वही है, और उसमें कुछ नहीं हो पाता। सो आई एम थिंकिंग मे बी सून। जस्ट सोच रहा था कि 1 के सब्सक्राइबर हो जाए, वॉच टाइम पूरा हो जाए, तो मैं भी सुपर चैट्स वगैरह इनेबल कर दूँ। और अगर आप में से कोई भला इंसान अगर मेरी हेल्प करता है, सो मैं भी जीपीयू ले पाऊँ थोड़ा सा। बाय द वे गाइज, हमारा एक बग बाउंटी पे कोर्स आने वाला है, जिसका आज मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही सारे एंड पॉइंट्स वगैरह बताए थे, क्या क्या चीज़ें डिस्कस होने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं उस कोर्स में। काफ़ी लंबा कोर्स होने वाला है, समवेयर अराउंड 8 to 10 hours एटलीस्ट, जो मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ। तो स्टे ट्यून, मे बी 10 अप्रैल, 10 मई के आसपास, 15 मई के आसपास हम उसको लॉन्च करते हैं। बट वो दिक्कत वही है कि जीपीयू नहीं है, तो एक्सपोर्ट होने में, रेंडरिंग होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं उसका वर्क अराउंड देख रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। वर्चुअल मशीन रैम के प्राइस में जी, हाँ भाई, रैम के प्राइस में 2 जीपीयू बहुत आराम से आ जाएंगे। रैम बहुत है भाई। तब मैंने जब ली थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ये, जब ये प्राइस हाइक हुए ना उससे कुछ 2 महीने पहले लिए थे भाई। तो हम क्या कहते हैं, जरूर मैं क्या कहते हैं, जीपीयू, मतलब तब प्राइस बहुत कम थे। अब तो जो प्राइस पे मैंने ली थी एटलीस्ट उससे 3 से 4 गुना हो गए। आज की डेट में तो नहीं ले पाता भाई, इतनी थोड़ी लेता फिर मैं 64 GB, फिर मैं मैक्सिमम 32 GB लेता। 32 भी मोर देन इनफ थी मेरे लिए, बट तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं ले लेता। मुझे डुअल चैनल करना था और 32 की स्टिक मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। जीपी मैंने कहा बाद में सोचेंगे, बाद में देखेंगे जब जरूरत हो। और अब लग रहा है कि ले लेना चाहिए। ब्रो अहमद भाई को फिर एक दिन ले आना, अच्छा सेशन था। हाँ भाई, वो सेशन काफ़ी अच्छा था। मेथडोलॉजीज वगैरह पे काम करने को मिला, सारी की सारी चीज़ें। एंड या आई विल बी कनेक्टिंग विथ हिम, लेट मी ड्रॉप मैसेज हिम वेल। ब्रो इट वाज अ लवली सेशन, थैंक यू सो मच। उसको मैंने किया नहीं भाई को तब तो, क्योंकि मैं कॉल वगैरह में बिजी था। Bro, it was a lovely session. Thank you so much for joining. Stay connected. We are gonna collab soon again. मैसेज डाल दिए भाई मैंने। थैंक यू सो मच सिफत, मुझे याद दिलाने के लिए, मैं भूल ही गया था। इसको भाई को कुछ मिला?
backstage.jbl.com पे फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, काफ़ी 4 घंटे हो गए, अब मैं ना थोड़ा सा ऐसा टायर्ड सा फील कर रहा हूँ, तो मैं मैनुअली इतना पार्ट जाना नहीं चाहता। क्या लगता है आपको हमारे 1K सब्सक्राइबर कब तक रीच हो जाएगी? अब आज 850 कितने हो गए? 850, एक सेकेंड, F52 है। सैटरडे और संडे 2 दिन में 150 आ सकते हैं। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, आई बी ऑनेस्ट, आ तो सकते हैं। कॉफी फेल, आई हैवंट हर्ड अबाउट इट ब्रो, क्या है ये? वल्नरेबिलिटी इन लाइनक्स कर्नल 2026, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हो आप? टोकन लिमिट्स कैसे मैनेज करते हैं? कुछ नहीं भाई, ये खत्म हो जाती है यार। यू आर टॉकिंग अबाउट दिस वन ब्रो, स्टॉक मंत्रा टिप्स। कीप इट अप ब्रो, थैंक यू सो मच राजा, आई थिंक राजा कुमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट ऑल ऑफ यू गाइस हैव बीन गिविंग टू मी, एंड आई कैन अश्योर यू मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूँगा। अभी आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है जो मेरी रेगुलर वीडियोस वगैरह रोज़ जाती थी, बट जस्ट ट्राइंग टू सेट पाइपलाइन ताकि मैं वो भी कंटिन्यू करता रहूँ। अभी रोज़ मेरी रेगुलर वीडियो जो पहले जा रही थी वो नहीं जा पा रही है जब से मैंने लाइव जाना शुरू किया है, क्योंकि जो हमारा बग बाउंटी वाला कोर्स आने वाला है वो भी थोड़ा काफ़ी मेजर है, ऐसा नहीं है कि छोटा है यार, उसके लिए रिसर्च बहुत करना पड़ती है। क्योंकि मैं भी जैसे, नो ऑफेंस बट किसी को मैं ऐसे पर्सनल वो नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ऐसे नहीं करना चाहता जैसे सारे के सारे लोग अभी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना, कि सब देखा जाए तो यूट्यूब पे सारे के एक जैसे हैं। सही है, अच्छा है, वो समझा रहे हैं अच्छे से, आप लोगों को समझ भी आ रहा है, इवन मैंने भी उन्हीं से पढ़ा है बहुत कुछ। बट मुझे एक चीज़ लगती है कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें बता देते हैं जैसे हमने वही स्कूल वाले, और एग्जाम्पल पहले भी देता हूँ कि हमें स्कूल के टाइम पे पढ़ाया था साइन थीटा कोस थीटा, ये थीटा वो थीटा, बट क्या वो रेगुलर यूज़ होता है हमारी ज़िंदगी में? तो आंसर इज नो। तो इसलिए मुझे ना बग बाउंटी का जो कोर्स बना रहा हूँ उसके लिए काफ़ी रिसर्च करना पड़ रही है। मैं नहीं चाहता ऐसी कोई रैंडमली कोई चीज़ बता दूँ जो आप यूज़ ही नहीं करते, उसमें काफ़ी टाइम चला जाता है। सो या थैंक यू सो मच ऑल गाइज, यू हैव बीन showing the support. Hi, I am new to this channel. What are you doing? Can you explain? We actually, bro, we are just trying to hunt any bug on any live application. We started this series 5 days ago. Today is the 5th day, और हम ये continue करने वाले हैं until we reach 1 CR in bug bounty, which is gonna take months. This is the truth. But we are gonna continue live until unless I'll be, मतलब कहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम आ जाता है, कहीं स्टक हो जाता हूँ, which I'll be updating you. Otherwise I'm gonna continue. So stay tuned. We are gonna learn a lot. मैं भी बहुत कुछ सीखने वाला हूँ. I'll be very honest. ऐसा मैं भी मास्टर नहीं हूँ किसी चीज़ का, तो मुझे भी रोज़ पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तब जाके मैं आपको बता पाता हूँ, जो कि मुझे अच्छा लगता है कि मुझे भी इसी बहाने सीखने को मिल रहा है। चेक योर मशीन इज वनरेबल और नॉट। ओके, यस, CV 2026। सीधा एक काम करते हैं, CV उसके पे चलते हैं ना NVD पे, वहाँ से पढ़ते हैं क्या है ये फालतू में क्या करना। मॉडिफायर आफ्टर एनरिचमेंट, लाइनक्स कर्नल इज वनरेबल टू दिस वन 7.8। ठीक है, जरूर, ठीक है, आज जरूर आई चेक इट आउट। डज क्लोड रियली हेल्प एंड हैव यू सबमिटेड एनी बग्स येट? हाँ भाई, बग बाउंटी में थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, बस ऐसा नहीं है कि, बट अगर तुम सोचो कि पूरा वही काम कर देगा तो वो नहीं होता। बट तुम्हारा अटैक सरफेस वगैरह थोड़ा सा कर लेता है तुम्हारे लिए, जो काम तुम मैनुअल करते थे, इतनी कमांड वगैरह कॉपी पेस्ट करना, ये तुम नहीं कर सकते। मतलब ये तुम्हारी हेल्प हो जाती है उस वाले पार्ट में, अदरवाइज तुम्हें करना पड़ता है। मैनुअल टेस्टिंग में ये बिल्कुल भी जीरो है आज की डेट में भी। बग बाउंटिंग डाई ड्यू टू, भाई ऐसा नहीं है AI का स्लोप की वजह से। बग बाउंटी में हाँ थोड़े से, ऐसा नहीं है कि इफेक्ट नहीं हुआ, इफेक्ट हुआ है, बट डाइंग ये ना, आई डू नॉट एक्सेप्ट इट। दिस इज नॉट गोना हैपन नो मैटर व्हाट, कितना ही एडवांस क्यों ना हो जाए AI, ये कभी नहीं होने वाला भाई। ब्रो आप कोई जॉब करते हो या फ्रीलांसर हो? अजीत ओरिजिनल, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइनिंग अजीत, thank you so much for joining. Don't forget to like, share अगर if you haven't any of you subscribed or liked it.
हाँ, मैं काम करता हूँ एक कंपनी में एज अ वीएपीटी। या, थैंक यू सो मच। हेलो ब्रो, आई एम पंजाबी, व्हाट इज दिस ब्रो? थैंक यू सो मच वीरे, सत श्री अकाल। ज्वाइन करने वास्ते थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लियो। ना दसो अपना की है नाम। ओ बी आई टी हो तो समझ नहीं हो दिया। ना ड्रॉप करो अपना की है कमेंट्स। अनस्टेबल 291 बट क्लोड गिव्स अ लॉट ऑफ फॉल्स। यस, वही मैं बोल रहा था भाई थोड़ी देर पहले कि क्लोड हेल्प कर देता है, तुम्हारी रिपोर्ट राइटिंग में हेल्प कर देगा। ठीक है, अगर तुम्हें बता दो कि तुम्हें ऐसा ऐसा कुछ फाइंडिंग्स वगैरह मिली है, आगे अटैक वेक्टर क्या हो सकता है, तो वो तुम्हें बता देगा कि भाई, सच सच एन एग्जाम्पल कि मैंने अभी अपने किसी दोस्त को बताया कि भाई मेरे पास ये सर्टन इशूज़ वगैरह आ रहे हैं, ये इशू ये है कि भाई मैं सोच रहा हूँ ये करना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ वो करना चाहिए। नॉट लिमिटेड टू बग बाउंटी बट लिमिटेड टू इन रियल लाइफ कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, मैं क्या करना चाहिए। तो वो अब तुम्हारी पहली बात पूरी बात सुनेगा, फिर तुम्हें बता देगा भाई तेरे पास 4 ऑप्शन है, तेरे पास 2 ऑप्शन है, तेरे पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, सी कर सकता है, डी कर सकता है। देन यू आर गोना डिसाइड कि हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। तो चैट जीपीटी इस सेक्टर में तुम्हारे लिए हेल्पफुल है कि तुम्हें बता देगा। फॉल्स पॉजिटिव बहुत आते हैं, मुझे भी पता है भाई। टोकन सिस्टम इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग। हाँ, क्लाउड का ये है। चैट जीपीटी में ये नहीं है कि तुम लिमिटेशंस वाला इतना पार्ट, बट क्लाउड में है। बट क्लाउड काफ़ी ज़्यादा सही है कंपेटिवली टू द चैट जीपीटी। और जैसा अभी अहमद भाई ने बोला था थोड़ी देर पहले, इसको चैट जीपीटी की जगह फेक जीपीटी भी बोल सकते हैं। पहला फीचर है एआई स्पेशलिस्ट। प्रेप पाथ क्या बेस्ट है भाई? प्रेप पाथ की बात की जाए, सबसे पहले स्टार्टिंग करो तुम नेटवर्किंग, उसके बाद तुम स्टार्ट करो लाइनक्स वगैरह के बेसिक कमांड वगैरह सीखो। उसके अलावा आपको वेब एप्लीकेशन कैसे काम करती है, फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल में सीखो। और स्टार्टिंग में इंटर्नशिप लेने की कोशिश करो भाई। और अगर तुम्हारी बजट वगैरह है तो ट्राई कर लो एक सर्टिफिकेट लेने का। और सर्टिफिकेट के लिए मैं रेकमेंड करूँगा ईजेपीटी, या और अच्छा जा सकती है तो ईडब्ल्यूपीटी। पर्सनल ओपिनियन से बढ़िया सर्टिफिकेट है। ये तो तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेट आ जाता है तो मैं बहुत इजीली एंट्री लेवल, और आई वुड से कि एक इंटर्नशिप, या इंटर्नशिप तो कहीं नहीं गई भाई। ठीक है, सिफत भाई डेफिनेटली नो मैटर वॉट 1 CR पहुंचना है भाई। कैसी बातें कर रहे हो भाई? आई एम गोना रीच 1 CR नो मैटर, चाहे 1 महीना लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे। मैं ये छोड़ने वाला नहीं हूँ भाई। अब मैंने 100% सोच लिया है। अब मैं ऑब्वियसली भाई इसके अलावा कोई ऑप्शन ही कहाँ है। जब हम साइबर सिक्योरिटी में सब कुछ कर रहे हैं तो फोकस इसी पे रखना है मुझे। आई एम गोना इम्प्रूव माई सेल्फ टू द उस पॉइंट तक जहाँ पे मैंने भी कभी सोचा नहीं हो। जस्ट वेट एंड वॉच। बस आप लोग अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। ट्रस्ट मी, एक दिन ऐसा आएगा जब वी आर गोना बी सिटिंग एनी हायर नंबर और हायर प्लेसेस, एंड यू विल बी जस्ट वॉचिंग एंड कहना कि हाँ भाई ये बंदे को हमने, वो कहते हैं ना कि आज की डेट में भी आज बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स वगैरह हैं जिनको हमने जेनुअनली जीरो से बढ़ते हुए देखा है। और आज उनकी जो भी जिस भी पॉइंट पे है, ऐसा लगता है कि वो पर्सनल ग्रोथ है। यू आर गोना फील दैट, फील दिस, फील दैट एज वेल फॉर मी, ट्रस्ट मी। बट अपना साथ बनाए रखना भाई। ब्रो मैं फ्रीलांसिंग शुरू कर रहा। नाम डेविड अपरा। चलो बढ़िया भाई, लगे रहो लगे रहो। यू आर गोना डू इट। सो ऐसे पता है सेइंग कि यस, नो मैटर व्हाट, आई एम नॉट गोना स्टॉप इट। एक बार थोड़ा सा मेरी पॉकेट वगैरह थोड़ी सी लाव करें। आई एम गोना स्टार्ट विद द OSCP फर्स्ट। जीपी वगैरह ये तो कुछ टाइम में बहुत जल्दी रिजोल्व हो जाएंगी, एंड आई एम गोना डू दैट। जैसे ही हो जाए ना जीपी वगैरह के दिन, सबसे पहले मैं OSCP खुद को इम्प्रूव करना है, OSCP पे काम करूँगा भाई। तो क्या हो गया, अब अटक जाता है ये जीपी के लिए। ये भी बोल देता है बीच बीच में कि गरीब। तो OSCP करूँगा, OSCP के अलावा फिर मैं ऐसे सर्टिफिकेट करता रहूँगा। आई एम गोना इम्प्रूव माई डे एवरी डे। अनस्टॉपेबल, आई सबमिटेड अ बग रिसेंटली एंड इट गॉट फ्लैग्ड एज अ डुप्लीकेट। होता है भाई, डुप्लीकेशन बहुत ईजी है। हर्ट, यस इट हर्ट्स। इट वॉज अ क्रिटिकल बट वेयर डू यू लुक फॉर प्रोग्राम लाइक HackerOne में ट्राई मत करो शुरू में भाई। आई वुड 100% मतलब तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, जाओ पहले गूगल डॉर्किंग से ढूंढ लो यार। गूगल डॉर्किंग से कैसे ढूंढते हैं वो मैं भी थोड़ी देर में बताता हूँ।
उसके अलावा ट्राई करो ESP हैक से स्टार्ट करो, इंटीग्रिटी से ट्राई करो, क्योंकि यार हैकर वन पे ना भरे पड़े हैं लोग, बहुत ज़्यादा रस हो रखा है, बहुत ज़्यादा रस हो रखा है, तो करो उसको भाई। तो लुक फॉर द प्रोग्राम, ये सारी की सारी चीज़ें देखो, गूगल डॉकिंग वगैरह देखो, गूगल डॉकिंग के लिए देखो मैं बताता हूँ। लो मैं भी भूल गया क्या था वो यार, वो वेबसाइट का नाम। लो सर्च कर लेना गूगल डॉकिंग, ये लो भाई, बेस्ट बग बाउंटी डॉकिंग, इस तुम्हें गिटहब पे लिंक ही मिल गई इसकी भाई की, ठीक है। ये रहे डॉक्स डॉट लिमिटेड, ये लो उठाओ एक ही पेस्ट करो, ये आ गया देखो, इन URL में तुमने बेसिकली ये डाला रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर, सर्च किया, ये देखो सारे के सारे आ गए, इनमें से कोई भी उठाओ, स्टार्ट करना, हंट करना शुरू कर दो। ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे ब्लाइंडली मत कर देना, बट उनका देखो थोड़ा सा, ये देखो क्या क्या एक्सेप्ट करते हैं वो, आउट ऑफ स्कोप है, आउट ऑफ स्कोप को बिल्कुल भी टच मत करना, इन स्कोप क्या क्या है उनके, ये सारी की सारी चीज़ें करो। देखो ये आ गया, कुछ नहीं, एक सिंपल लिंक वगैरह डाली, इसका मैं तुम्हें गूगल डॉकिंग का लिस्ट जो भी है इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो जाओ इसको मजे करो, यूज़ करो इसका गूगल डॉकिंग का, और तुम इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दो, ठीक है। इनको यूज़ करना शुरू कर, एज पर द इंडियाज बेस्ट हैकर राइट नाउ। यार इंडियाज बेस्ट हैकर, अभी मैं इस पे कुछ कमेंट करता अच्छा नहीं लगूंगा। ओके, आई विल ग्रो अप विथ यू इन दिस जर्नी ऑफ बाउंड्री, श्योर भाई श्योर, एंड मे बी वी विल बी कोलैबोरेटिंग वेरी सून, हो सकता है हम किसी दिन, डेफिनेटली आई एम गोना डू इट। AK2003 भाई, अपना यूजर नेम बदलो यार पहले तो यार, इफ यू गोना डू दैट, AK2003 इसको नेम को बदल के जो आपका नाम है ना प्रॉपर वो लिखो, ऐसे यूजर नेम से मज़ा नहीं आता यार। स्टॉक मंत्रा टिप्स ट्राई कर्नल सीटी, हाँ यार मैं करूँगा अभी थोड़ा बाद में सोच रहा है। हेलो ड्यूड शॉर्ट फ्लिक्स, हेलो हेलो भाई, वेलकम वेलकम, जो भी अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आई नो इट्स अ क्वाइट लेट बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड अगर आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ करो, सब्सक्राइब करो, वी आर गोना डू अ गिव अवे ऑन 1K, सो प्लीज़ डू इट। सर भाई ये सर वाले सीन मत बोला करो, स्पेक्स ऑप्शन जो भी आपने कमेंट किया, आई एम नॉट गोना रीड इट अंटिल अनलेस यू रिमूव दिस सर वाला जो भी फंडा है। हाय ब्रो, आई एम वाचिंग यू फर्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर सम बलजीत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई रिसीव प्राइवेट बग बाउंटी प्रोग्राम इन्विटेशन ऑन इंटीग्रिटी। सो भाई ये होता है, अगर आप तुम रिपोर्ट वगैरह सबमिट करना शुरू कर देते हो ना, इसलिए मैं कहता हूँ कि VDP से स्टार्ट करो आप अपना, जैसे अहमद भाई का भी वही POV था, कहीं ना कहीं 99% 95% एटलीस्ट हमारी चीज़ें मेथडोलॉजी मिलती हैं, और बाकी सब हैकर की अलग अलग होती है। तो उन्होंने भी यही, उनका भी यही कहना था, मेरा भी वही है कि VDP से स्टार्ट करो, तुम्हारा क्या है, रेपुटेशन जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होने वाला है, तुम्हें सीखने को मिलेगा इनिशियली, पहले पैसों के पीछे मत भागो, तो पहले एटलीस्ट 5-7 सबमिशन वगैरह ऐसे दो जहाँ पे तुम्हारी रेपुटेशन बढ़े। अब रेपुटेशन बढ़ेगी तो तुम्हें, जैसे अभी कोड MYT भाई का कहना है कि उनको भी प्राइवेट बग बाउंटी वगैरह में इनविटेशन मिला है, तो इसीलिए मिला है क्योंकि उनका रेपुटेशन अच्छी होगी, तो ये करना पड़ेगा तुम्हें भी। आदर्श भाई, मैं बग बाउंटी कैसे करूँ? बग बाउंटी करने के लिए भाई आपको पहले बेसिक्स वगैरह स्टार्ट करो, ठीक है। बेसिक्स वगैरह के लिए तुम स्टार्ट करो, सबसे पहले नेटवर्किंग के पार्ट पढ़ो, फिर उसके बाद लाइनक्स वगैरह पढ़ो, उसके बाद फिर वेब एप्लीकेशन फंडामेंटल्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ो, उसके बाद फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। बग बाउंटी ऑन कर्नल CTF एंड MSRC पे वेब इज मोर ब्लोटेड, हाँ यार ये बात है, वेब में ना बहुत ज़्यादा वो हो गया है। एंड इवन आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम थिंकिंग कि वेरी सुन आई बी स्विचिंग फ्रॉम द वेब एप्लीकेशन टू द एप्लीकेशन टू द मोबाइल एप्लीकेशन बाउंटी पार्ट में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको, क्योंकि मुझे भी एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा मैंने काम किया नहीं है, तो मुझे 1-2 मे बी कोर्सेस वगैरह थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करके कोई परचेस करूँगा, और पर मेरा मन है उसमें करने का, क्योंकि वेब एप्लीकेशन में ना बहुत 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 लोग आते हैं, जो कि अच्छी बात भी है, बट आई गॉट 3 CV इन लास्ट वीक, ओह दैट्स ग्रेट ब्रो, कॉन्ग्रेचुलेसन्स कॉन्ग्रेचुलेसन्स भाई, बहुत बढ़िया, लगे रहो ब्रो। लाइनक्स यूज़ करते हो? डेफिनेटली भाई, लाइनक्स के बिना तो सर्वाइवल ही नहीं है। सादिक भैया, आई हैव फंडामेंटल्स नॉलेज ऑफ नेटवर्किंग लाइक्स लेयर्स ऑफ, हम बढ़िया। DNS ओके, रोड मैप यू हैव, वांट टू गेट इनटू साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग।
ओके, लेट मी गिव यू अगेन नाउ एंड अगेन। सबका सबसे ज़्यादा डाउट ना रोड मैप को ही है लेके आता है। तो भाई ये वाली वीडियो आई एम गोना शेयर विद यू, कहाँ गई? ठीक है, ये वाली वीडियो है जिसका मैं लिंक आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। इस वीडियो को देखो, इसमें आपके मोस्ट प्रोबेबली सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट वगैरह बचता है सो डोंट फॉरगेट टू कम बैक। जो भी आपके डाउट वगैरह आते हैं सब सारे ड्रॉप करना, आई एम गोना गिव वन एंड वन, एक एक करके सारी की सारी चीज़ें। बट पहले वीडियो देखो, उसके अलावा जो भी डाउट वगैरह होते हैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। सिफत भाई हमरे इधर काल ने सिफत भाई कैसे काम बात कर रहे हो? ठीक है, तुम्हारे यहाँ नेट नहीं था तो कोई बात नहीं भाई, चलता है। आ जाए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून प्रो, स्टे कनेक्टेड, अनस्टेबल। डिड यू गेट इन पेड बाउंटीज? यस आई हैव। I have even been in Wall of Fame for PepsiCo, Dyson, and most probably in Snap Deploy as well, which they haven't embedded as well, but उनका confirmation आ चुका है, तो 3 में हो जाएगा। Bro, I wanna just learn। भाई ये वाली वीडियो देखो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। भैया हो गया है वो सब, आप अभी डॉकिंग कर रहे हो गया है वो सब, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये बेसिकली मैं बता रहा था कि कैसे यू कैन जस्ट फाइंड आउट द पब्लिक एप्लीकेशन जहाँ पे तुम कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये आ गई इलूमियो, रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर है, उठाओ काम करना शुरू करो। ये आ गया भाई नाइकी, ये तुम्हें नहीं मिलेगा हैकर1 पे शायद। ठीक है, ये आ गया तुम्हें ये स्टाइल, इसका मैंने लिंक ऑलरेडी दे दिया था, अगर आप में से किसी को नहीं मिला है तो ये सारी की सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, टू गेट इन पेड स्टार्ट। भैया हो गया है वो सब, आप अभी वर्किंग कर रहे हो ओबीटीओ ब्रो। पहले हाउ टू नो ओएस फर्स्ट स्टेप है। हाँ बट वो अभी बिल्कुल अभी से बता दिया अगर उनको हाउ टू नो ओएस फर्स्ट, तो वही वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में फंस जाएंगे और वो वहाँ पे गिव अप कर देंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा वैसा पार्ट है। तो इसलिए मैं किसी को ये सजेस्ट नहीं करूँगा वहाँ से स्टार्ट करें। एज अ बिगिनर स्टार्ट करो पहले नेटवर्किंग से, वेब एप्लीकेशंस वगैरह क्या होती हैं थोड़ा थोड़ा, जब तुम फिर वीएपीटी का वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के बारे में एक्सप्लोर करा करो शुरू करो। जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिर डीप डाइव जाना। डायरेक्ट जाओगे तो तुम पागल हो जाओगे। ब्रो कौन सा ओएस यूज़ करना है हैकिंग के लिए? काली भाई, काली के अलावा क्या है? आदर्श अड्डा, शो योर क्रेडिबिलिटी, या ब्रो दैट्स गुड सर्चिंग टेक्निक टू फाइंड वीडीपीज। यार मैं आदर्श, सो बेसिकली तो आपने डे 1 से ज्वाइन नहीं किया। अगर आपने डे 1 पे ज्वाइन किया होता, डे 2 पे ज्वाइन किया होता तो मैंने लाइव दिखाया था स्नैप डिप्लॉय का। उसके अलावा अगर आप, क्या था दूसरा नाम, पेप्सिको का देखना चाहते हो, लो भाई डायसन का मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे, उनकी वेबसाइट पे है कहाँ पे, मुझे याद नहीं आ रहा। किस चीज़ का एग्ज़ाम है भाई? अरे यार ये लॉगिन के लिए बोल रहा है। चलो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सॉरी गाइस। पेप्सिको का दिखा दूँ एक बार, अगर बस ये लॉगिन हो जाए। ठीक है, ये रहा पेप्सिको, विच आई एम नॉट गोना शो यू एवरी डे, बट चलो आज बात उठी तो दिखा देते हो। बाय द वे इस पे जो मैं दिखा रहा हूँ ये हमारी मेरी पुरानी आईडी थी जो कि किसी वजह से ख़राब हो गई थी। ये रहा देखा पेप्सिको, पेप्सिको के थैंक्स में अगर जाएंगे तो हाँ भाई ये रहा 19th चंदीप सिंह, ये मेरी आईडी है।
2 मिनट बाद किस चीज़ का एग्जाम है भाई? भाई वो HSC इक्वल टू हायर सेकेंडरी एग्जाम 12th का। अरे भाई साहब 12th में हो और अभी से बग बाउंटी। सही है भाई, क्या इरादा है? इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे आपके। ये वाला डॉल्फिन वाला मैंने लिंक दोबारा से एक बार भेज देता हूँ। अगर किसी को चाहिए हो तो प्लीज़ सेव कर लेना, बाकी मैं ना यहाँ पे भी कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी एडिट कर देता हूँ। बाकी मैंने यहाँ पे भी ऐड कर दिया, और रोड मैप वाली भी ऐड कर देता हूँ, वीडियो सब बोलते रहते हैं। और अगर आप में से किसी ने अभी तक डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लेना। बाद में मैंने आपसे पूछा, किसी ने रिस्पॉन्स दिया नहीं। बस थिंकिंग कि इसी सैटरडे को हम लाइव जाएं एक, क्या बोलती हो? कहाँ गया? थैंक यू सो मच हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग। ठीक है गाइस, तो मैंने ये वाली दोनों चीज़ें, जो गूगल डॉकिंग की जो लिंक थी वो, और आप लोग मांगते रहते हैं रोड में वाला, ये मैंने सेव कर दिया है यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, हैकिंग स्टार्ट कैसे करें भाई? हैकिंग कैसे स्टार्ट करें? एस गेमिंग, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का ज्वाइन करने के लिए, जो जो रिसेंटली ज्वाइन किया है। बायो में लिंक दिया हुआ है रोड मैप के नाम से, उस वीडियो को पूरा देखो, चेक करो, उसमें जो भी आपके डाउट हैं मोस्ट प्रोबेबली सारे खत्म हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई रहता है तो ड्रॉप कमेंट है यार, मैं रिजोल्व करूँगा, बट पहले वीडियो देखो यार प्लीज़, मैं सब कुछ वैसे एक्सप्लेन किया है मैंने। भाई एक और क्वेश्चन है बस, आई एम ऑल्सो डूइंग CH, विल इट हेल्प मी टू गेट अ जॉब भाई? प्लीज़ हेल्प भाई। देखो, आई बी वेरी ऑनेस्ट, CH अच्छा सर्टिफिकेट होता था 2022, 2023, 2024 मैक्सिमम तक। उसके बाद आज की डेट में CH को HR के अलावा कोई नहीं जान रहा। मतलब जानते हैं बट यार उसमें ना अभी वो उतना दम रहा नहीं जो पहले हुआ करता था। अब ना अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। बट अच्छा है, अगर तुमने ऑलरेडी परचेस कर लिया है तो ठीक है, अच्छा है। सर्टिफिकेशन ऐसा नहीं है, तुम्हारा जो HR वाला जो फिल्टरेशन वाला है, फिल्टर वाला पार्ट है, वो जरूर पास करेगा। मैंने भी किया, इसी वजह से करना पड़ा मुझे भी। अदरवाइज उससे अच्छे अच्छे बहुत सर्टिफिकेट आ चुके हैं यार। EWPT उसमें से अच्छा है। EWPT तो खैर एडवांस है, एक्सपीरियंस होगा तुम्हें 3-4 साल का तभी कर सकते हो। बट ठीक है, हाँ तुम्हें जो मिल सकती है, हाँ मिल सकती है। स्टार्ट करो, इंटर्नशिप से स्टार्ट कर लेना अगर नहीं मिलती है तो। ब्रो मेरे को नहीं सीखना है, थोड़े बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे, मुझे बताओ क्या करूँ? मेरे को नहीं सीखना है। ओबी तो आई डिडंट गेट योर पॉइंट, क्या बोलना चाहते हैं भाई? बग बाउंटी इस सारे क्वेश्चन हैं, 2 साल हो गया कर रहा। सही है भाई, सिवत लगे रहो यार, बहुत बहुत बढ़िया लगा ये देख के यार। यू आर इन 12th एंड
स्टिल इट हैज़ बिन 2 साल तुम कर ही रहे हो ऑलरेडी। ग्रेट भाई, हेड्स अप टू यू भाई। अभी जैसा मार्केट चल रहा है, इधर कोडिंग और एथिकल हैकिंग में कंफ्यूज हूँ, चूज नहीं कर पा रहा हूँ। दिल की सुनो भाई, दिल क्या कहता है, किसमें मजा आता है तुम्हें। कोडिंग में याद रखना कि बस ये हमेशा याद रखना कि कोडिंग में भी हो सकता है कि तुम 2 साल में अच्छी जॉब पे चले जाओ, ये हो जाओ, उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बट एथिकल हैकिंग में ऐसा नहीं है। तो क्या तुम ग्रीन कर सकते हो? तुम्हें रोज़ पढ़ना है कुछ ना कुछ, रोज़ कुछ नया नया आ रहा है, रोज़ कोई नई वनबिलिटी आ रही है, रोज़ कोई ना कोई नया अटैक से वेक्टर आ रहा है, रोज़ कोई ना कोई नई टूल्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी मतलब इतनी ज़्यादा इवॉल्व हो रही है। तो उसके लिए तुम्हें रोज़ पढ़ना पड़ेगा भाई, अगर तुम उस चीज़ के लिए रेडी हो तो इसमें आओ। अदरवाइज कोडिंग भी अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है, मैंने काम किया 3 साल भाई, बहुत अच्छा स्कोप है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट कुछ नहीं होने वाला भाई, ये वो ना, क्या बोलूँ मैं टर्म बोल रहा हूँ, बबल बबल वाला सीन होता है ना, तो बस एआई का कुछ ऐसा बबल ही बन रहा है, बहुत जल्दी फूट जाएगा। एंड नो मैटर कितना भी एडवांस एआई पहुंच जाए, तुम्हारी जॉब नहीं लेने वाला। बाय द वे गाइस, आज भी हमने एक और रिपोर्ट सबमिट की दी है। इसके चांसेस काफ़ी कम हैं, बट लेट्स सी, होपफुली अगर ये इम्प्रूव हो जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, तो वक्त की इसको देखने में 1-2 दिन लगेंगे। एंड या आज का तो इतना ही। आई थिंक काफ़ी टाइम हो चुका है ऑलरेडी, 2:40 हो चुके हैं, एंड इट बीन 5 घंटे से ज़्यादा हो गया मैं लाइव चलते चलते। तो आई थिंक नाउ वी शुड ड्रॉप अ वाइल। अगर आप में से किसी का कोई डाउट हो, कुछ हो, तो वी कैन डिस्कस नाउ। हेलो ईपीरियम, हेलो भाई, वेलकम वेलकम टू इनक्रिप्टिकल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ब्रो। ब्रो बताओ मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ यार? वीडियो देखो, वीडियो का लिंक मैंने यहाँ भी दिया हुआ है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसको अच्छे से सीखो, देखो, वहाँ पे आपके मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे रन हो जाएंगे। ठीक है, सीखो, शुरू करो वहाँ से, और जो भी होता है देन अकॉर्डिंगली स्टार्ट। 7 स्टार है। हाय भाई, हेलो 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 हेलो, 7 टाइम कर दिया। बाय द वे यार, यू आर ट्राइंग टू इंजेक्ट हेयर। डीएसए कर रहा हूँ, जल्दी शायद लग जाए जो। बढ़िया भाई, बढ़िया, लगे रहो। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच ईपी गेम। वेलकम वेलकम। स्केलर से अच्छा, ठीक है। Yeah, Ethereum, I can. Yeah, that you need to do yourself, bro. गूगल डॉर्किंग की मदद से यू कैन फाइंड आउट ऑल द एप्लीकेशंस फास्ट एपीआई पे जो भी चल रही हैं। गूगल डॉर्किंग की मदद से यूज़ कर सकते हो तुम। और गूगल डॉर्किंग का अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में उसको, तुम्हें इंपॉर्टेंट लिंक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। मॉडिफाई करना होगा तुम्हें अपने अकॉर्डिंगली, बट गूगल डॉर्किंग तुम बेसिक समझ लो। कंपनी रियली गेट बाउंड ड्यू टू सिंपली फिशिंग, नथिंग मोर देन दैट। इफ यू नो रियल टेक वेक्टर वर्क्स नाउ कंटेंट। यस, अग्री। आयुष भटनागर भाई, अगर हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं, लाइक बेसिक सिस्टम से उसके, तो क्या वाइब कोडिंग के स्टार्ट कर सकते हैं? यस यस, यू कैन डू दैट, बट जावास्क्रिप्ट जितना अच्छा कर लो उतना उतना ज़्यादा सही है। क्या हो रहा है यहाँ? सूरज है ईयरिंग, यहाँ पे वी वर डिस्कसिंग ऑन द बग बाउंटी भाई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स फॉर डॉग्स। नो मीन्स नो वरीज ब्रो। अटैकिंग मुझे आता है, डिफेंस थोड़ा दिक्कत मत करो। क्यों करना डिफेंस तुम्हें? दो साइड होती है बेसिकली, 3 टीम होती है यहाँ पे, ब्लू टीम, पर्पल टीम और रेड टीम। रेड टीम से तुम काम कर रहे हो डिफेंसिव साइड, सॉरी अटैकिंग साइड करो, क्या दिक्कत है? डिफेंसिव साइड जो डिफेंसिव टीम होगी उनको करना होगा, तुम्हें तो बस फाइंड करना है, वन ब्रिज वगैरह निकालना है, उसके बाद उन्हें सबमिट कर देना है। चलो डन भाई, मैं फिर चला कोडिंग करने। जरूर भाई जरूर आदर्श, सी यू टुमारो, आई थिंक 9 PM। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय टाटा। कोडिंग करो, जरूर जरूर करो भाई, मजे करो। अच्छी है कोडिंग भी भाई, मज़ा आता है यार कोडिंग में भी। आई डू रिमेंबर कि जो भाई घंटों घंटों तक बैठ के रिकॉर्डिंग करते थे, बहुत मज़ा आता था भाई।
और जो उसका रिजल्ट वगैरह कई बार इतना गंदा निकलता था, फटा हुआ, बट फिर उसको फिक्स करते थे। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस वाज लवली connecting with you everyone. Thank you so much for showing your support, and trust me, we are gonna do great in this field as well. बस अपना बनाए रखिएगा साथ सपोर्ट, एंड या अगर आप में से किसी का कोई भी डाउट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ मैसेज, अदरवाइज आई एम गोना और अब अगर आप में से किसी ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, और अगर आपने अभी तक डिस्कॉर्ड वगैरह ज्वाइन नहीं किया है वो भी कर लेना, क्योंकि जल्दी ही अभी हम डिस्कॉर्ड पे एक सेशन लेके आने वाले हैं। बेसिकली डिस्कॉर्ड पे हम स्टार्ट करेंगे, हाँ ऑल दो हम उसकी स्क्रीन शेयर वगैरह कर देंगे लाइव भी, बट या मे भी ना करें, दैट वी कैन डिस्कस, आई डोंट नो, बट वहाँ पे वही लोग ज्वाइन कर पाएंगे उसमें कॉल में। बेसिकली यू विल बी एबल टू ज्वाइन दैट कॉल, और तो आपका जो भी क्वेश्चन वगैरह होगा मैं उसका रिप्लाई वगैरह करूँगा, मतलब क्वेश्चन वगैरह का रिप्लाई नहीं, मतलब वी विल बी ऑलरेडी ओनली डिस्कसिंग, ऐसा 1-to-1 वाला बढ़िया आराम से चिल करेंगे। तो ज्वाइन कर लो जितने डिस्कॉर्ड नहीं किया है, एंड आई एम थिंकिंग कि इसी संडे को करते हैं, टाइमिंग में भी 6-7 बजे के आसपास, 1-1.5 घंटे के लिए, 6 बजे से करते हैं, चलो 5 या 6 बजे से, 5 से 7 कर लेंगे, 5 से 6:30, 1-1.5 घंटे के लिए, और उसके बाद हम आएंगे। सिफत जो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन ब्रो, हाँ जरूर जरूर सिफत, कल मिलते हैं, गुड नाइट भाई। और डिस्कॉर्ड आई थिंक आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है सिफत, बस वो कॉल पे रिमेंबर डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन, हम उस पर संडे को करने वाले हैं। मैं सोच रहा हूँ 5 बजे के आसपास कर देते हैं, ताकि 1-1.5 घंटा हम उस पर करेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा मुझे भी आराम मिलेगा, एंड दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जो भी ये लाइव वाला सेशन रहेगा। तो जिन जिन ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है सब ज्वाइन कर लो, जो भी आपके डाउट होंगे वहाँ पे हम 1-to-1 डिस्कस कर लेंगे। सूरज ये रिंग यू भी, अगर आप भी बग बाउंटी वगैरह सीखना चाहते हो तो भाई ऑलरेडी मैंने बायो में एक लिंक दिया हुआ है रोड मैप के नाम से, वो वीडियो देखो, आपके डाउट मोस्ट प्रोबेबली सारे, वो लंबी है थोड़ी वीडियो, तो आराम से देखना, जल्दबाजी में ऐसा मत करना कि 2 मिनट देखे और बंद कर दिया, पूरी वीडियो देखना डिटेल में आराम से, और जो जो आपके डाउट हैं आई एम श्योर कि आपके 90% डाउट उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई आता है तो कल लाइव 9 बजे हम स्टार्ट करेंगे, रोज़ करते हैं हम 9 बजे लाइव, कल आप आना, आपके जो भी मैसेज वगैरह है, जो भी क्वेरी वगैरह है ड्रॉप करना, मैं इमीडिएटली रिस्पॉन्स वगैरह दूंगा, ठीक है। प्यास लग गई। अच्छा था आज का सेशन भाई, मज़ा आया, अहमद भाई ने भी बढ़िया एक्सप्लेन किया मेथोडोलॉजी वगैरह, और हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय द वे हमारा जो आज का टास्क था, हमें 850 पे पहुंचना था, वो भी हमने क्रॉस कर दिया है, लाइक वाला भी हमने कंप्लीट कर दिया, तो आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच गाइस, यू हैव बीन वेरी लवली, और क्या बोलूँ भाई मैं, बाकी मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच, एंड विल बी कनेक्टिंग यू टुमारो 9 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 9 बजे कल आ जाना बिना रोक टोक के। और अगर आपने किसी ने अभी तक किया नहीं है डिस्कॉर्ड वगैरह ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नाम है इंस्टाग्राम पे भी इनक्रिप्टिकल। थैंक यू सो मच एवरीवन, और आई थिंक नाउ आई विल बी ड्रॉपिंग, सो बाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बाय एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।